Asim, count दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Okay, okay, loud 7, and clear. 8, 9, 10. Loud and clear. तो ऊपर होगा कि लगेगा हाथ में, देखिए तो लगेगा तो रेडी. Good morning to all. Once again, myself Satyaranjan Behera, teacher of English from Subhash Chandra High School, Sadar Block, Sundargarh. Dear students, very nice to meet you all after the summer vacation. I hope you all must have prepared very well during the entire summer vacations. So schools have already opened, and now all you are in your respective school, okay, and you must be preparing for the forthcoming examinations ahead. Okay, so dear student, this is a revision class. So the topic is recapitulation of tense. So this class is a revision class, and you know, tense is one of the most important part of your English learning. Unless you learn or know anything about tense, you won't be able to write, speak, or do anything in English. So tense is very essential. So that's why this virtual class is specially being taken by me regarding tense. And while discussing, we will be discussing about tense and the structure, uses, and various examples, so that it will recap you, it will remind you what you have learned in your class 9th English grammar book. And further, I would also like to tell you that there is a topic that is tense revisited in your class 10th first chapter. So if you know about tense and time, I think it will greatly help you to learn the topic that is tense revisited, which is going to be taught you just next month. So without delaying, let's start the discussion, recapitulation of tense. Okay, thank you. Dear students, as you all know, tense is very important. So actually we learn tense when we enter to class 6. When you enter to class 6, you learn tense. But it is very regretted to inform you that maximum number of students are not aware of tense. They are unable to understand the meaning, concept, the uses, the structure of tense. Please be sincere and attentive to the class, and I hope this fundamental idea of tense will greatly help you to go ahead in your next stage. Okay. So you know, tense is nothing. Tense is a verb form. Tense is a verb form. What is tense? You can if I will ask a question, what is tense? Normally students say tense means are kala. So in Odia it is tense mane kala. But what is tense? Actually tense means it is a verb form. Tense is the verb form. Tense ta kono pila mane? Tense is a verb form. Tense is a verb. Sorry. Tense is a verb forms. Tense is a verb forms. Tense होची गोटे verb forms. गोटे verb different forms रही. Verb first form रही, second form रही, third form रही, fourth form अछि,
फिफ्थ फॉर्म भी हमें रखीछु सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज अदरवाइज नोन एज टेंस a grammatical concept and different forms of verb is known as your tense go is the first form you can say go is the first form of the verb went is the second form of the verb gone is the third form of the verb going or you can fourth form you can take goes 4 number form में goes भी नहीं परिबा किबा going भी नहीं परिबा fourth form कला fifth form में हमें जदी going को नेला तार fifth form हे गेला ताले हमकु जानिबार अछि जे कोटी V1 लागिबो कोटी V2 लागिबो कोटी V3 लागिबो कोटी V4 लागिबो कोटी V5 लागिबो टेंस रो ए जो यूज गुडा को भर रो जो तार डिफरेंट यूजेस गुडा को जदी हमें जानिबा टेंस माध्यम रे ताले हमें किछि सेंटेंस लिखि परिबा तण पिला माने टिके टेंस टा को बुझिबा को चेष्टा करिबा एटी जस्ट गुटे हमें रिवीजन क्लास एटी हमकु दिया जाई छि एटा को हमें या माध्यम रे पिला को टिके किछि हमें जदी टिके रिमाइंड करेबा सो दैट क्लास 10th पढ़ला बेलो को जो पढ़िबो वर्तमान पिला माने तंकु किछि काम रे आसीबो तो एटी लेट अस डिस्कस अबाउट बेसिकली टेंस आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस and English has no future tense in place of future tense there is a future time that is separate thing that will be taught you later on सेटा अलगा कथा पछे पढ़ा जीवो so normally or generally we should have certain idea about present tense and past tense so let us go to first present tense so what is present tense means at the time of speaking present moment is known as the present tense so further present tense is again subdivided into 4 categories that is known to you present simple present progressive present perfect and present perfect progressive so first let us start from simple present tense प्रथम हमें simple present tense रो आरंभ करिबा first let us start from simple present tense means present indefinite ता कोन पिला माने ता स्ट्रक्चर गत वर्ष पढाइतला स्ट्रक्चर को देखो पिला माने स्ट्रक्चर जे कोन अछि देखो स्ट्रक्चर टा को हमें बेसिकली तीनटा भाग रे देखिबा सो स्ट्रक्चर टा तीन प्रकार स्ट्रक्चर रही छै नॉर्मली तीन प्रकार फोर्थ ता को हमें नउनु एफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फर्स्ट पिलाटी जानू जे एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट सिंपल रे एफर्मेटिव कोन तार स्ट्रक्चर कोन कहैतला आगुरु तुमको पढाई छी पिला माने प्रथमे सब्जेक्ट रहिबो फर्स्ट सब्जेक्ट रहिबो तापर मेन वर्ब रहिबो तापर मेन वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म रहिबो मेन वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म बा तापर थर्ड पर्सन हेगले सेतरे एस किबा यस लागि जबो तापर ऑब्जेक्ट भी हमें दउछु सेंटेंस टा भलो लागिबो तुमको पेसी बेलु को हम ऑब्जेक्ट गुटे भी नहीं जिबा ओके ठीक अछि तो स्ट्रक्चर भीतर हमें कोन एफर्मेटिव रहला एस प्लस वी प्लस ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमको मन रखबा अछि जे वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म हुए वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट टेंस ओके प्रेजेंट टेंस रो फर्स्ट फॉर्म ताकू हमें वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करू इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर जदी हेला थर्ड पर्सन सिंगुलर ले कोन हो ना वर्ब रे हमें गोटे एस किबा यस लगेबा हम कहउतली फोर्थ बा फिफ्थ फॉर्म रे तमे एस यस नहीं परिबो हमें सेठी एस लगेबा नले यस लगेबा सेटा अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स ता माने तापर जदी हमें एटा एफर्मेटिव पळे गेला एटा एफर्मेटिव हे गेला तापर आसी गेला कोन धरो नेगेटिव करबा ताकू सो बोले तमे एफर्मेटिव रे कथा करि परिबा ना कहि परिबानी तनो नेगेटिव बोले कोन करबा ना प्रथमे सब्जेक्ट नबा तापर ऑक्सिलरी वर्ब लागिबो बिना ऑक्सिलरी वर्ब हमें नेगेटिव करि परिबा नाही राइट ठीक अछि आई प्ले फुटबॉल जदी सपोज मु कहली आई प्ले फुटबॉल ताकू नॉर्मली हमें पिला माने जानन आई नॉट प्ले को आई नॉट प्ले फुटबॉल किंतु आई नॉट प्ले फुटबॉल पिला माने हबोनी काई कि ना प्लेटा होची गुटे मेन वर्ब तनो ऑक्सिलरी वर्ब नला कोन नबा ना डू आउट डच नबा राइट तनो सब्जेक्ट प्लस डू किबा डच तापर नॉट टा कोड लागिबो ना पिला माने बेले बेले एपोटे लगै दंती नॉट ठीक ऑक्सिलरी वर्ब परे जस्ट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब क्लास 9 रे नेगेटिव गुटे चैप्टर भी पढाइतला तनो सेठी नॉट लागिला तापर कोन हला पुनी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हे गेला ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट एटा हला नेगेटिव राइट ठीक अछि तापर आसीला कोन पिला माने इंट्रोगेटिव तापर नेक्स्ट आसला कोन पिला माने इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जेतेबे इंट्रोगेटिव पले कोन करे पिला माने प्रथमे ऑक्सिलरी वर्ब डू किमा डच को नबा राइट तापर सब्जेक्ट को नै जिबा तापर पुनी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तापर ऑब्जेक्ट तापर क्वेश्चन मार्क राइट डू नॉट फॉरगेट टू गिव द क्वेश्चन मार्क न देले कोन हो ना सेंटेंस टा इंट्रोगेशन हे परिबो नाही एटा तार स्ट्रक्चर टा ए एतिकी स्ट्रक्चर को पिला माने टिके मने रखि पारु नांती आ बहुत प्रॉब्लम फेस करूछन किछि नै एथिरे एटा तार स्ट्रक्चर एफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तापरे देखो एग्जांपल हमें तार यूजेस देखिबा तापरे एग्जांपल देखिबा यूज देखो पिला माने टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन
केतेबेले प्रेजेंट सिंपल टेंस व्यवहार करा जाए हैबिचुअल एक्शन अभ्यासगत कार्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वजनीन सत्य एटा मन रखिया पड़ो ना तमें तापर सर्टेन प्रोवर्ब्स केतेबेले प्रोवर्ब अछि उक्ति अछि सेथि मध्य लगा जाए तापर प्रेजेंट स्टेट वर्तमान अवस्था क्लास 10th रे बेउडा को पुनी रिकैपिचुलेशन हबो रिविजिटेड हबो तम टेंस रे એટલે हैबिचुअल एक्शन माने कोन हमर जोटा गोटे हमर हैबिट हे जाय वी एक्सरसाइज डेली गोटे हैबिचुअल एक्शन वी एक्सरसाइज डेली એટલે एटा प्रेजेंट सिंपल रा केमिति जानलो वी एक्सरसाइज डेली એટલે एठी देखो वर्ब टा आइडेंटिफाई द वर्ब एक्सरसाइज टाला वर्ब हलाटी हियर एक्सरसाइज इज द वर्ब एवं एटा देखो को फॉर्म अछि एटा वर्ब रा फर्स्ट फॉर्म अछि V1 रे अछि वी लागिला वी एक्सरसाइज डेली तेणु एटी डेली एक्सरसाइज करबाटा गोटे मोर गोटे अभ्यासगत काम तेणु एटी कोन कली एटी तार वर्ब रा फर्स्ट फॉर्म लगे सेमति मु सबदिन स्कूल को जाए आई गो टू स्कूल एवरी डे इट इज माय हैबिट आई गो टू स्कूल एवरी डे ओके ठीक अछि आई ईट राइस एवरी डे से बडा प्रेजेंट सिंपल टेंस रहला हेले हैबिचुअल एक्शन तापर यूनिवर्सल ट्रुथ द अर्थ मूव्स राउंड द सन द अर्थ मूव्स राउंड द सन देखो एटी मूव्स टा हेला वर्ब मूव्स टा कोडी छी थर्ड पर्सन द अर्थ ता कोन हला थर्ड पर्सन सिंगुलर हला एटी कोन लागिला भर एस किबा एस जोग करा जाय इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर आमे वर्ब को देखि करी एम ओ वी ई मूव थिला मूव रे गोटे जस्ट ऐड कर देला आमे कोन एस लगे देला हेले कोन हला द अर्थ मूव्स राउंड द सन एटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थ ता सन रो राउंड रे कोन मूविंग करूची मूवमेंट करूची तेणु एटा गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ सेमति आमे नै परिबा आ गोटे एग्जांपल भी नै परिबा द सन राइजेस इन द ईस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट माने सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए एटा गोटे जनरल ट्रुथ बा यूनिवर्सल ट्रुथ हला कि नै तो जनरल ट्रुथ हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेबा मैन इज ए सोशल एनिमल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी एटी इज लगला मैन इज ए सोशल एनिमल एटी गोटे वर्ब अछि पिला माने फट के इज देखिले माने एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हेतिबो किंतु इज पर एटी आईएनजी लागिनी मैन इज ए सोशल एनिमल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एटी तेनु एटा कोन हला ना जनरल ट्रुथ प्रेजेंट सिंपल टेंस सेमति प्रेजेंट स्टेट माने वर्तमान अवस्था आई एम ए टीचर दिस इज प्रेजेंट स्टेट आई एम ए स्टूडेंट आई एम ए डॉक्टर मिस्टर मोहन चरण माझी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रेजेंट स्टेट ओके भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा प्रेजेंट स्टेट हेले जले प्रेजेंट स्टेट था वर्तमान अवस्था था तापे में प्रेजेंट सिंपल टेंस व्यवहार करि थाउ राइट ठीक अछि तो एटा हला प्रेजेंट सिंपल टेंस रो जस्ट केते गुडी यूजेस पिला माने तुमको रिमाइंड कर दिया गला तुमे ताकू पढिबो मने रखिबो तापर एटी आउ गोटे जिंस मन रखिबो पिला माने वी ऑफन यूज द वर्ड्स लाइक नेवर ऑलवेज ऑफन सेल्डम माने केतले केमती बाय चांस क्वचित समटाइम्स बेले बेले यूजुअली एवरीडे ऑन संडेज once a month with this tense present simple tense रे नॉर्मली आमे ए सब एडवर्ब मान को मध्य आमे व्यवहार करू हला कि समटाइम्स आई विजिट टू माय फ्रेंड्स हाउस देखो मु बेले बेले मो सांग घर को जाए समटाइम्स आई विजिट टू माय फ्रेंड्स हाउस ओके ठीक अछि यूजुअली हला आई यूजुअली गो टू पार्क ऑन संडेज I usually go to park on Sundays. Go लगी कि नहीं भर को तुम मार्क करो I usually go to park. Usually go माने normally बा usually मु जाए साधारणतः मु Sundays मान करे Sundays भी ही पारो प्लुराल हेले भी हो माने सबु रविवार मान करे मु पार्क को जाए गो इट्स माय हैबिट I go to park on Sundays. ओके ठीक अछि तेणु एमती केते गुडी एडवर्ब सब अछि केते गुडी वर्ड अछि ए वर्ड गुडा को हमें कोन करू हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस रे व्यवहार करू ओके सेमति सेल्डम धरा गुटे डिफिकल्ट वर्ड अछि सेल्डम माने कोन क्वचित हला सेल्डम माने कोन सेल्डम माने क्वचित ही सेल्डम कम्स टू मी कम्स देखो भरपू हला ही सेल्डम कम्स टू माने से मो पाखु क्वचित आसे बाय चांस केतेबेले आसे काम पड़ले से अदरवाइज से मो पाखु बहुत लिस्ट आसे माने बहुत कम आसे सेल्डम माने लिस्ट एलईएसटी लिस्ट तो एमती केते गुडे वर्ड अछि एगुडा को तमे केमती चिन्हिबो ना तार देखिबो तार यूज कोथरे लागि छि तापरे कोन सब एडवर्ब लागि छि तापरे तार भर फर्स्ट फॉर्म जदी अछि बा थर्ड पर्सन सिंगुलर हेतले एस केबा एस लागि छि ताले सेइटा ला प्रेजेंट सिंपल टेंस आ प्रेजेंट सिंपल टेंस हमर बहुत काम रे लागे प्रेजेंट दिनसोडा को लेखिबा गले हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस लागिबो ट्रांसलेशन कला बेले मध्ये हमको
प्रेजेंट सिंपल टेंस रे ट्रांसलेशन भी आसे बुझी तेणु प्रेजेंट सिंपल टेंस तुम एटा भल कि बुझब तार बेसिस रे तुम ट्रांसलेशन कर भर गुड़ाक एटी गोटे कि दुईटा भर मुझे तुमको कहली कि पांचटा भर कहली ता व्यतिरिक्त तुम कौन यू सिलेक्ट सम ऑफ द भर्ब्स तुम बही रु केते भर्ब्स नहीं जाओ एवं ताकू प्रेजेंट सिंपल टेंस रे तुम यूज कर आ तुम टीचर्स को देखाओ ठीक अच्छे पिला माने इट्स ऑल राइट नेक्स्ट टिके आगु को जीवा बर्तमान आम देखा पिला माने एक्टिविटी टिके देखिबा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे भर फास्ट फॉर्म हुए हेले देखिबा कोन एक्टिविटी मने अछि पिला माने आम एक्टिविटी बेस्ड रे एटा टिके क्लास टा कले भलो हबो खाली मु कहूतले तो पिला भलो हबनी कोन बुझिबो देखो fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs देखो पिला माने सिंपल प्रेजेंट टेंस रो वर्ब आमे एठी लगेबा देखो पिला माने वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि एठी आई होप तुमे यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेरी इजी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके प्रथम रो कोजी सिंपल प्रेजेंट टेंस एठी आमे कोन करबा वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज करबा वी विल यूज ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यू मस्ट रिमेंबर इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर यू विल यूज either s or yes to the right ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन the sun days brightly the sun days brightly ब्रैकेट रे दुईटा भर दिजे गोटे साइन अछि आ गोटे साइंस अछि s h i n साइंस माने कोन ब्राइटली साइंस ब्राइटली होला उज्जवल भाबरे उदय होंती ओके ठीक अछि हेले दि सन ता थर्ड पर्सन सिंगुलर अछि बोधे मु टिके हिंट्स भी दे देली क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर ता के कहबो टिके पिला माने कहलो कोन सी गोटे स्कूल कहलो ठिया गिरी क्वेश्चन नंबर 1 get ready which school yes Rakin school okay पिलाने सुनी परछ am I audible to you yes or no yes please stand up yes yes try yourself stand up dear microphone on please on the microphone the sun shines brightly the sun shines brightly shines brightly Sinus. very good Sinus. science yes science is the sinus नुहे ताको पिला माने साइंस पढिबा s h i n science हला the sun shines brightly माने सूर्य ब्राइटली कोन करे शाइन करंती उज्जवलित देखा जानती बा ताकर शाइनिंग ता बहुत ब्राइटली तारने हुए सो दी सन शाइन्स ब्राइटली हला तो एठी दी सन ता थर्ड पर्सन थिला तेनु साइंस इज द राइट आंसर एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर वेरी गुड बुझी पारलो नेक्स्ट को जिबा पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा I live in Delhi but my brother lives in Mumbai good you have given right answer ठीक अछि बढ़िया कहलो देखो पिला माने फर्स्ट क्वेश्चन रे देखो द सन शाइन्स ब्राइटली एटा गोटे एवरीडे रे गोटे वर्ड देखो बुझुछि तो हैं माने एटा कोन माने एटा गोटे जनरल ट्रुथ सूर्य सब बेले चकचक करी उदय होंती बा उदय होंती सेमती आई डेज इन दिल्ली आई कोन कहले आंसर आई लिव इन दिल्ली बट माय ब्रदर यस माय ब्रदर लिव्स इन Mumbai मुंबई वेरी गुड बढ़िया आंसर दलो तुमे हेले एठी से छुआटी काहे के तुमे लिव लगैलो से ठीक बुझी छंती ना आई प्रोनाउन सांगरे बा आई सब्जेक्ट सांगरे लिव रो एग्रीमेंट हला नै कि आई सांगरे लिव रो एग्रीमेंट v1 हला एवं एठी माय ब्रदर ता कोन हला थर्ड पर्सन सिंगुलर हला तेनु एठी कोन हला लिव भर रे लिव्स से गेला नै कि तो ता उडिया कोन हो मु दिल्ली रे रहे एवं मो भाई मुंबई रे रहंती ओके जेतबेले आमे एई बलिया रहे रहंती एमती कहबा सेटा प्रेजेंट सिंपल टेंस को बुझेबो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर आमे नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 3 को आमे जिबा वर्तमान ही ऑलवेज gets up at 6 o'clock in the morning he always gets up at 6 o'clock in the morning good gets up is the right answer he always देखो always ता गोटे एडवर्ब always लागि छि फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्लास 9 रे पढाई छि always ता गोटे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नै कि केमती से पोजीशन कोठी नला देखो ठीक भर रो पूर्व रे लागे एडवर्ब कथा मने करो क्लास 9 रे एडवर्बियल्स पढाइतला ही ऑलवेज गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग सो एटी ऑलवेज इस वाडा को लागे मु तिके आगु जस्ट कहउतली तेनु थर्ड पर्सन अछि बोली हला एटा गोटे हैबिचुअल एक्शन तापर एटी थर्ड पर्सन अछि बोली एटी एस लागिला राइट ठीक अछि भलो मन रखिछ नेक्स्ट टीना डेज आर हेयर ट्वाइस ए वीक टीना washes her hair twice a week. बढ़िया very good you have remembered very well I hope you must have prepared
क्लास 9 बुक वेरी वेल बढ़िया पढ़ी पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा दिस बस डैश डू नॉट डज नॉट गो टू बरगढ़ दिस बस Does not डैश go to. This bus does not go to Burger. वेरी This bus does not go to Burger. राइट दिस बस डज नॉट गो टू बरगढ़ तो पिला माने बढ़िया कहूछ तो एठी आमे भूल कोन करू ना दिस बस डू नॉट गो टू कहबा तो एबे हेबिट हे गेलानी दिस बस ता थर्ड पर्सन सिंगुलर अछि नहीं नेगेटिव कले कोन हबो ना दिस बस डज नॉट गो टू बरगढ़ अब आमे जो आगे छोट बेले भूल करथला बा आमे पाठ जान नथला बेले कोन दिस बस नॉट गो टू बरगढ़ लेख अनेक पिला सेमति भी आमे न जानिथला बेले लेखुतला बट तो माने सब बढ़िया कहिलो दिस बस डज नॉट गो टू बरगढ़ ओडिया रे कोन कहबा ताकू दिस बस डज नॉट गो टू बरगढ़ र माने कोन एही बसटा बरगढ़ को जाए नाही ना कि मु धरा जो गोटे बस स्टेशन रे सुंदरगढ़ रे ठिया आइछि आ मु जने जेंटलमैन को पचारिबी कोन करबी मु कहबी एक्सक्यूज मी सर डज दिस बस गो टू बरगढ़ डज दिस बस गो टू बरगढ़ तो से जेंटलमैन जदि बरगढ़ को जाऊ नथि बोले कोन कहबे सॉरी दिस बस डज नॉट गो टू बरगढ़ ताले एई बसटा कोठी के जाए पुनी पचारले आ गोटे क्वेश्चन ओके सर देन व्हेयर डज दिस बस गो पुनी देखो डब्ल्यूएस क्वेश्चन इंटरोगेटिव कर देली व्हेयर डज दिस बस गो तबे दिस बस गोस टू संबलपुर एई बसटा संबलपुर जाए ओके ओके थैंक यू सर आई एम सॉरी आई विल वेट फॉर अनदर बॉक्स सो इट इज देखो पिला माने कोन हला कन्वर्सेशन हला प्रेजेंट सिंपल टेंस रे कन्वर्सेशन हला एमती हम जदि कन्वर्सेशन करबा प्रेजेंट सिंपल टेंस हमर काम भी हबो ट्रांसलेशन भी हबो बहिर पाठ भी हमें करि परिबा बढ़िया कहूछ पिला माने बहुत सुंदर लागिला मने रखिछ दैट मींस यू हैव लेबर्ड हार्ड ड्यूरिंग दिस समर वैकेशन नहीं पिला माने समर वैकेशन रे भलो पढिछ पिला माने बढ़िया बढ़िया कहूछ सेमती खुशी कर दियो कहिगिरी नेक्स्ट पिला माने देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को टिके रिमाइंड करबा नहीं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस तुम जानिछ सब पिला माने तुम तो बहुत बढ़िया कहूछ मोटू तो बहुत बढ़िया तुमने कहूछ सो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यू नो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस टिके रिमाइंड कर दोछि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज अदरवाइज नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जहा आ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी ताहा तो प्रेजेंट सिंपल आ कंटीन्यूअस भीतर टिके अलगा हबो टिके पिला माने कंटीन्यूअस टे टिके अलगा हबो ताकू आ संगे मिसेइबानी स्ट्रक्चर टा टिके देखिलो पिला माने गोटे स्ट्रक्चर लिखिछि कोन लिखा छै ना सब्जेक्ट लिखा हला प्लस तापर कोन लिखिली सब्जेक्ट प्लस तापर एठी आसीगला टिके बदलिला पिला माने सब्जेक्ट प्लस एमिजा ता गोटे बी भर रो फॉर्म हम बी फैमिली को जिबा बी फैमिली रो तार फैमिली मेंबर सब अछंती ना एमिजा प्रेजेंट टेंस रे बी रो फैमिली मेंबर्स हले एम इज आर हला सब्जेक्ट संगे एम रो एग्रीमेंट हे पारे इज रो किबा आर रो एग्रीमेंट हबो सब्जेक्ट को देखि कि एग्रीमेंट करबा तीनटा जगह को एका संगे लगाइबानी तापर कोन हो पिला माने एठी टिके बदलिला पिला माने सेठी मेन भर रो फर्स्ट फॉर्म होतला एठी मेन भर रे कोन हेगला पिला माने आईएनजी फॉर्म हला माने फोर्थ फॉर्म बा फिफ्थ फॉर्म अनेक सार माने फोर्थ फॉर्म रे आईएनजी भी रखि पारंते किबा फिफ्थ फॉर्म रे भी रखि पारंते तो मु ताको आईएनजी कहि दोछि तो मेन भर रे आईएनजी लागिवो नै कि पिला माने मेन भर आईएनजी लागिवो तापर ऑब्जेक्ट गोटे हमें नै जिबा ऑब्जेक्ट न नले टिके सेंटेंस ता भलो लागेनी आ मु बारंबार कहूछि पैसिव कला बेलको ऑब्जेक्ट रो काम पड़िवो तो सेहि पई एबेटू एमती रखि दो तो एटी देखो पिला माने सब्जेक्ट प्लस एमिजा प्लस मेन भर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मेन भर आईएनजी माने गो प्लस आईएनजी गोइंग इट प्लस आईएनजी इटिंग रन प्लस आईएनजी रनिंग नहीं कि डांस प्लस आईएनजी डांसिंग कहीं डांस ई कोटला सेटा जानिछ सेटा को कहबो आवश्यक पड़ुनी तो गोटे भर आईएनजी लगेबा तो प्रोग्रेसिव माने आईएनजी गोइंग रनिंग प्लेइंग डांसिंग इनवाइटिंग कॉलिंग सो मेनी प्रोग्रेसिव वर्ब्स आर देयर तो पिला माने खाली प्रोग्रेसिव करले तो हबोनी कहीं ना प्रोग्रेसिव पुनी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव अछि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव तेनु आमे कोटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कोटा पास्ट प्रोग्रेसिव असुदा आइबो मु आई गोइंग टू मार्केट आई गोइंग आमे बेले बेले खुशी रे एमती सांग संगे इंग्लिश रे কথা बोल आई गोइंग टू मार्केट मु आटको जाउची कहलो किंतु ऑक्सिलरी वर्ब टिके छाडी देलो नै कि आई एम गोइंग टू मार्केट बा कथा तो ऑक्सिलरी वर्ब लगै कि आईएनजी लगैले सेटा आमे ताको प्रोग्रेसिव प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करबा एमइजार प्लस मेन वर्ब रे आईएनजी तो एबे तुम ठीक निश्चय इंग्लिश कहबो ऑक्सिलरी वर्ब छाड़ीबोनी किंतु एग्रीमेंट केमति करबो आई संगे एम रो एग्रीमेंट हबो वी संगे आर रो एग्रीमेंट हबो दे संगे आर रो एग्रीमेंट हबो ही संगे इज रो एग्रीमेंट हबो चिता इज हबो तेणु कहा संगे कहारो एग्रीमेंट हबो नै कि एग्रीमेंट जदि ठीक न होला पिला माने डिसएग्रीमेंट हे जिवो डिसएग्रीमेंट हेले ग्रामेटिकली भूल हे जिवो नै कि भात और डाली एग्रीमेंट हला मु कहि भात और चीनी एग्रीमेंट हे परिबो नाही तो सेमती एटी भी सेमती ठीक एग्रीमेंट करिवो ओके बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर ठीक अछि एटा अफर्मेटिव हला नेगेटिव हले कोन हबो ता परे नोट लगे देबो नै कि पिला माने नेगेटिव हले यार परे नोट लगे देबो आउ इंटरोगेटिव हले कोन करबो ना ऑक्सिलरी वर्ब को सामना को आनी आसीबो नै कि ताले सेटा हे जिवो मने अछि तुमर मने पड़ी जथिवो यूज कोन जस्ट गोटे गोटे यूज पिला माने जानिबा मु जानु छी बहुत गुडा सो मेनी यूजेस गुडा को जानि गले पिला माने कंफ्यूज हो जंती आमे एटलीस्ट गोटे यूज तो जानु
से गोटे यूज रे आमे बहुत बाट चली परिबा गोटे यूज देखो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बस यही गोटे कथा को तुम जानिलो पिला माने दिस टेंस दिस प्रोग्रेसिव टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस action or something that is going on or happening at the moment of speaking तार माने हला पिला माने गोटे को मन रखो आ अन्य गुडा को न जानले भी चलिबो माने कोनसी कार्य वर्तमान मोर जदी कंटीन्यूअसली चालू अछि मु तुमको वर्तमान वर्चुअल स्टूडियो रु इंग्लिश पढोछि एटा प्रेजेंट मोमेंट मु वर्चुअल स्टूडियो रे ठिया आइछि मोते तमे देखुछ मोटू पाठ सुनुछ आ तमे सेपटे भी पाठ रिप्लाई दउछ बा पाठ सेठी सिखुछ तो एठी कोन होछि ना मोमेंट ऑफ स्पीकिंग रे मु पाठ पढौछि तुमे पाठ सिखुछ तो present progressive action is going on. I am teaching you English. I am teaching you English grammar right from the virtual studio now. बुझो सी नहीं ठीक है तो and you are learning English. You are learning English. तो तमे you are learning. I am teaching. हला एमिजा प्लस मेन भरे आईएनजी लागिले present progressive tense हे जीवो बुझो सी फॉर एग्जांपल it is raining outside बाहर वर्षा होउची बाहर जदि वर्षा होउची देखो इट इज रेनिंग आउटसाइड दैट मीन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इट इज रेनिंग आउटसाइड बाहर वर्षा होउची अच्छा एटी गोटे पिला माने कथा मने पड़ला एटा वर्षा बाहर वर्षा होउची द रेन इज रेनिंग आउटसाइड काहे कि सर कहलेनी नहीं एटा टिके बहुत कंफ्यूज हे पिला माने इट माने एहा एमती बुझिछो सेमती नहे पिला माने जानिछो त माने इटटा होउची वर्षा पई हम गोटे डमी सब्जेक्ट इट यूज करथाउ तनो इट इज रेनिंग आउटसाइड इट रेफर्स टू द रेन तार माने रेन इज रेनिंग न कहकि इट इज रेनिंग आउटसाइड इट इज द डमी सब्जेक्ट of rain right ठीक अछि सेमती देखो इज लागे एग्रीमेंट ला द फ्लावर्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड द फ्लावर्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड देखो फूल गुडी को ग्राउंड रे पडू अछि आर लागिला फ्लावर्स प्लुरल अछि अच्छा जेतेबे एग्रीमेंट करिया पिला माने हमें देखिबा जे सब्जेक्ट रो वर्ब का सिंगुलर अछि कि प्लुरल अछि से अनुसार हमें ताकू कोन करिया पिला माने एग्रीमेंट एटी आर अछि फ्लावर्स अछि बोली आर फॉलिंग हला फूल गुडी को ग्राउंड रे पडू अछि माने एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग फूल कोन अछि पडू अछि द फ्लावर्स आर फॉलिंग द फ्लावर्स आर सिमिलरली द फ्लावर्स आर शावरिंग माने ए मोमेंट रे फूल पडुछि माने देखुछि आ ता संगे से कामटा एक्शन ता गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग माने कोन कहबा मुहूर्त रे जो कार्य होउछि ता पई मोमेंट ऑफ स्पीकिंग प्रेजेंट रो कहै जाय तो दिस इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ताकू जदि हम नेगेटिव करबा नॉट लगे देबा देखिए आजिकली मु आउ पार्क आड़े जाऊ नहीं इट इज रेनी सीजन नाउ डेज आई एम नॉट गोइंग टू पार्क देन व्हाट आर यू डूइंग ताले तुम कोन करछो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय फोर्थकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन वेरी सिंसियरली तमने कोन मु मोर आगामी बोर्ड परीक्षा पई सिंसियरली पढ़ा पढ़ी करू अछि आई एम प्रिपेयरिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होछ कि नहीं पार्क आड़े जाऊ नहीं आई एम नॉट गोइंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग तुम्हें कौन कर व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली से आउ जने कहूँ तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कौन वर्तमान काम मु पढ़ापढ़ी करूँगी कहवा मुहूर्त में कौन कार्य चलुले प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस व्यवहार करा जाए पिला माने नहीं कि तो एमती टिके टिके ताकू मने रखिबो मने कले हमें टेंस ताकू क्लास 10 रो चैप्टर आरंभ कला बेलू तुमको इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अच्छा एक्टिविटी टिके पिला माने मने करबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे गोटे एक्टिविटी करबा पिला माने सी डेज ए कार देखो फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव खाली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पिला माने एमिजा प्लस मेन भर रे आईएनजी नेगेटिव क्वेश्चन जदी थिबो कि इंटरोगेटिव थिबो से बलिया जेमति कहली टिके चेंज करिवो फर्स्ट क्वेश्चन टिके रेडी होला पिला माने टाइम शॉर्ट हिबो सी डेज ए कार She is driving a car. She is driving a car. She is Very good. driving a car. Driving a car. हां सी हां के जने सी इजे जो होई गेला ठीक अछि बढ़िया बढ़िया सेटा भी राइट सी इजे जो छै थेमति भूल होय सी इजे ड्राइविंग ए कार होबनी सी इज ड्राइविंग ए कार देखो इज पर इमीडिएटली मेन भर आईएनजी फॉर्म हो इज रा परे इमीडिएटली मेन भर प्रोग्रेसिव फॉर्म ए जो आईएनजी फॉर्म होछ ना ड्राइविंग जो कहला पिला माने सेटा होछ प्रोग्रेसिव बा आईएनजी फॉर्म तो सी इज ड्राइविंग ए कार माने television. How? हां दे आर वाचिंग टेलीविजन से माने देखो They ओडिया are में watching television house. वेरी गुड वाह एटा हाउटा भूल अछि नाउ एटा प्रिंटिंग मिस्टेक अछि हाउ एटा नो नाउ दे आर वाचिंग टेलीविजन सेमती द ट्रेन डेज द प्लेटफॉर्म The train is leaving the platform. The train is leaving the platform. गुड बहुत बढ़िया द ट्रेन इज लिविंग द प्लेटफॉर्म द बर्ड्स नॉट इन द स्काई द बर्ड्स नॉट इन द स्काई आईएनजी करो नेगेटिव अछि पिला माने ऑक्सिलरी वर्ब लगेगिरी करो
The birds not flying in the sky. हाँ 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 ठीक अच्छे एटा फ्लाइटा को फ्लाइंग कल आईएनजी तो हम सेटा फ्लाइटा को फ्लाइंग कल FLYING किंतु ऑक्सिलरी वर्ब कौन लागिबो बार्ड्स अच्छी कि नहीं Are हाँ the birds गुड सेटा not flying? सेटा हाँ यस दी बार्ड्स आर रो परे नॉट लागिला नहीं कि नॉट आमे कोठी फिटिंग करबा नॉट बोल्ट कोठी लगेबा ठीक ऑक्सिलरी वर्ब परे दी बार्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई यू हैव गिवन राइट आंसर वेरी गुड सेमती गोटे क्वेश्चन रे भी क्लास सॉरी What are you doing this day? वेरी गुड What are you doing this day? व्हाट आर देखो एटी आर लागिला व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज एटी मेन वर्ब आईएनजी लागिला एटी आर यू डूइंग हेगला वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर दले पिला माने ठीक अछि नहीं कि तमर आंसर सब ठीक अछि अच्छा ठीक अछि बर्तमान नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर टिके डिस्कशन कर दवा प्रेजेंट परफेक्ट को टिके मने पकेबा सबटा तो पिला माने बोधे पढी होबनी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेट अस डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट रो स्ट्रक्चर कोन पिला माने तुम तो निश्चय जानि तो स्ट्रक्चर फास्ट पिला माने बेसिक जिंस वाला स्ट्रक्चर छोटिया जिंस किछि नाही मने रखिबार एठी कोन कोडा अछि स्ट्रक्चर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोन अछि सब्जेक्ट प्रथम अछि पिला माने फास्ट सब्जेक्ट लागिला नहीं कि एफर्मेटिव रा सब्जेक्ट तापरे एठी बदलिला देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को भूल प्रेजेंट परफेक्ट को आसो हैव और हैज तापरे मेन भर रो एठी कोन हो पिला माने एई मेन भर जो लेखा देखो छडाई छी मेन भर रे कोन हो पिला माने थर्ड फॉर्म मेन भर रो केउ फॉर्म हो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पिला माने जेमती गाड़ी रो गियर थाए ना सेमती भर रो भी पांचटा गियर अछि नहीं कि 1 2 3 4 5 को गियर पकेले गाड़ी कोठी केमती चलिबो तमे गाड़ी जानू छ से विषय तो जेतेबेले प्रेजेंट परफेक्ट हबो ना मेन भर रो को फॉर्म हबो थर्ड फॉर्म ब्लाइंडली यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर टाइम परफेक्ट टेंस सेठी हमरो थर्ड फॉर्म लागिबो हेले थर्ड फॉर्म यूज जानिबा V1 जानिछु V2 जानिला VING जानिला V रे थर्ड फॉर्म नहीं कि जेमती गो वेंट गॉन डू डिड डन ईट एट इटेन रन रेन रन सी सॉ सीन एमती हमें प्रैक्टिस करिछ जानिछ एठी देखो तापर नेगेटिव हेले कोन करबो सेमती तुम जानिछ तापर ऑक्सिलरी वर्ब परे नॉट लगे देबो तापर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ इंट्रोगेटिव हेले सामना को हैव और हैज पळे आसीबो सब्जेक्ट आगो यूज देखो यूज कोन देछि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड एटा देखो गोटे यूज जानो एटलीस्ट an action that has been recently completed action grammatical language रे action माने कार्यटी एबे सरीछि जस्ट एबे सरीछि माने सेटा देखो पास्ट रे सेटा पास्ट हे गेलानी कामटा सरी जायछि किंतु तार इन्फ्लुएंस ता प्रेजेंट संगे अछि ता माने ठीक अछि तापरे जेमति आ गुटे अछि हां सेई जो कथा कहली टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच हैज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट तार इफेक्ट अछि वर्तमान संगे तो एठी गोटे जिंस मन रखा पिला माने एटलीस्ट ए गोटे जिंस को जानले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ता करि पकेबा एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट और रिसेंटली एक्शन कंप्लीटेड बट इट हैज ए प्रेजेंट इन्फ्लुएंस तार वर्तमान संगे गोटे रिलेवेंस अछि बा गोटे लिंक अछि सेति बेले ता पई मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करू ओडिया रे कोन कहबा ना कार्यटी अतीत रे सरी थिबो किंतु वर्तमान तार गोटे प्रभाव रहउथिबो ता पई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें यूज करदो फॉर एग्जांपल देखो ही हैज जस्ट कम ए सेंटेंस को देखो पिला माने वर्ब किया आइडेंटिफाई द वर्ब टेंस जानिबा टेंस होउची वर्ब फॉर्म वर्ब केमि जानिबा ना जे दुईटा वर्ब गोटे हैज अछि आ गोटे कम अछि हैज हला कोन हैव और हैज भितरु हैज लागिला हीटा थर्ड पर्सन सिंगुलर तेनु हैज लागिला कमटा कोन ला कम इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कम केम पुनी थर्ड फॉर्म भी कम ही हैज जस्ट कम से एबे जस्ट पहुंची माने कोन से तार जोता मोजा खोलिनी स्कूल रु पिलाटी एबे जस्ट आसी मा कहले पिलाटी एबे जस्ट आसी पहुंची हेले तार देखो जस्ट पहुंची माने कोन हला रिसेंटली एक्शन ता कंप्लीट हेछि से तार शूज भी खोली नाही तो ही हैज जस्ट कम सेमती एठी आ गुटे देखो आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म देखो वर्बल ग्रुप किए हैव आ वॉच एटा हला वर्बल ग्रुप दीटा वर्ब अछि हैव वर्ब लागिला वॉच ता को मेन वर्ब हला एटा को फॉर्म एटा हला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म ए सिनेमाटा मु देखिछि टीवी रे गुटे सिनेमा दउछि हला गुटे टीवी रे गुटे फिल्म दउछि तमे से फिल्मटा को कहउछ मु ए फिल्मटा देखिछि अलगा चैनल तम भौणी को कहउछ अलगा चैनल लगाओ आई हैव सीन दिस फिल्म और आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म ता माने कोन एक्शन ता आगुरु कंप्लीट हेछि मु आगुरु सिनेमाटा देखिछि
फर्दर आई डोंट वांट टू वाच दिस फिल्म ए सिनेमा मु देखा चाहू ना तो सिनेमा देखा कमटा आगु होइछि किंतु तार विषय रे तुम एबे भी कहि पारिबो तो तार प्रेजेंट संगे तार गोटे लिंक रहुछि तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे कोन हो एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट हैज अ प्रेजेंट रिलेवेंस जेंति मु मोर सर होमवर्क कर देछि सर आई हैव डन माय होमवर्क I have done my homework. I have completed my homework. Hala, my friend has invited me to his birthday party. Has your friend invited you? Conversation करछो तुमको तुम सांग कोन जन्मदिन को डाकी छंती कि has your has your friend invited you to his birthday party? Oh yes, he has invited me to his birthday party. हाँ से मते निमंत्रण करिछि केमती निमंत्रण करिछि ना से मते गोटे इनविटेशन कार्ड दैछंती he has given me an invitation card प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे हला कि नहीं पिला माने तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे कोन हबो ना एक्शन ता आगुरु सरी देबो प्रेजेंट संगे तार रे लिंक रहउतो बहुत कथा अछि तुम जानिछो ठीक अछि एक्टिविटी गोटे करबा एक्टिविटी 3 देखबा फिल इन द ब्लैंक्स विथ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पिला माने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे कोन हबो ना मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हबो मेन वर्ब को फॉर्म हबो थर्ड फॉर्म हबो देखो एक्शन सब कंप्लीट एटी हे जाईछि देखो पिला माने I did my homework just now. Present perfect किए करिवो? I am finished my homework just now. Once again, I have finished my homework just now. Just now. ठीक अछि. Smita has solved all the sums. एटा आंसर आसी देखो पिला माने सॉल्व होय देखो सॉल्व रो थर्ड फॉर्म कोन हला सॉल्व हो गेला एठी काहे कि हेज लागला एठी काहे कि हेब लागला डिफरेंस देखो पिला माने संग मान को समस्त को टिके बुझेबो क्लासरूम रे भी तुम टिके टीचर हो तुम जी भल बुझिला से पाख पिला को आउटे बुझे देबो हले आउरी भल पाठ हबो निजर भी इंप्रूवमेंट हबो स्मिताटा कोन हले पिला माने स्मिताटा थर्ड पर्सन सिंगुलर अछि तेनु ता संगे रे हैज रो थर्ड पर्सन सिंगुलर हां गुड थर्ड पर्सन सिंगुलर हला तेनु स्मिता हैज सॉल्वड ऑल द सम्स माने अंक नै कि गणित स्मिता कोन करछि सबु गणितर समाधान करि देछि माने ऑलरेडी करि देछि तेनु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हला सेमती they days a lot of work today They have do a lot work today. Done a lot of work. They have done a lot work today. Good. They have done. Do, did, done. नहीं हमें 3 नंबर पे पकेला बढ़िया राइट सेमती नेक्स्ट who dares my fountain pen who dares my fountain pen Who has किए मोर taken my fountain pen को fountain नहीं pen? Who takes Right, my very fountain Who pen? has taken? yes who has taken take to taken एमते ताको गियर बदलुतबा take to taken who has taken my fountain pen right Rasmi and Resma days flowers for the chief guest Rasmi and Resma days flowers Rasmi for and the chief Resma guest have flower for the chief guest. Rasmi and yes, Rema Ras- has Rasmi bring and flowers Resma for the chief guest. have bring हां have Rasmi लाइबो and कि हैज Resma लागिबो have brought flower of the chief guest. राइट वेरी गुड रश्मि आउ रेशमा प्लुराल हला तेनु हैव लागिगला आउ ब्रिंग भर थर्ड फॉर्म हला ब्रॉट रश्मि एंड रेशमा हैव ब्रॉट फ्लावर्स फॉर द चीफ गेस्ट रश्मि आउ रेशमा चीफ गेस्ट को पाई फूल आनी छंती ऑलरेडी आनी कि स्कूल रे रखी देलेनी आउ आधा घंटा पर चीफ गेस्ट आसीबे पचारलो सर को आनी छंती कि नहीं कि whether रश्मि एंड रेशमा हैव ब्रॉट फ्लावर्स फॉर द चीफ गेस्ट यस सर दे हैव ब्रॉट तेणु आम कौन बेले बेले कौन ना हैव लगे आम ब्रिंग लगे देवा भूल हुए तेणु प्रैक्टिस ट्रांसलेशन कले हो यहाँ सिंपल पास्ट टेंस टी देखा सिंपल पास्ट टेंस भी वेरी इंपोर्टेंट पिला माने ए लेटर टू गॉड लिखला बेले सिंपल पास्ट टेंस काम पड़ो ए लेटर टू गॉड प्रोज तो निश्चय पढ़ा हो ए लेटर टू गॉड से गोटे स्टोरी अच्छी सिंपल पास्ट टेंस रे बेसी से माने बेस्ड ऑन सिंपल पास्ट टेंस आम नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ला बेले इंग्लिश रे भी सिंपल पास्ट टेंस विभिन्न जगह में सिंपल पास्ट टेंस बहुत काम रे आसीबो सो व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर कोन देखो पिला माने स्ट्रक्चर कोन अछि पिला माने सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म देखो भर मु तुमको 1 नंबर गियर देखेली 2 नंबर गियर देखेली आईएनजी फॉर्म देखेली सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म देखेली पिला माने भर सेकंड फॉर्म देखो 2 नंबर गियर भर कोडी पड़ो मेन वर्ब ओके सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हले तमर सिंपल पास्ट टेंस ताको नेगेटिव कले टिके एक्सेप्शनल अच्छे देखो नेगेटिव टा एटा टिके भल करी पिला माने मन रखो जानिछो सब्जेक्ट प्लस तापर कोन डिड लागिला तापर नॉट लागिला तापर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हला प्लस ऑब्जेक्ट हेगला एटा हला तमर सिंपल पास्ट टेंस रो नेगेटिव स्ट्रक्चर टा तो एठी पिला माने गोटे कंफ्यूज हो पिला माने देखो सर एठी डिड टा लागिला एठी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपण तो सर कहउतले मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म टा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे लागे ले जदी एठी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लागिला आमे केमिति रिकॉग्नाइज करिवु जेटा प्रेजेंट टेंस ना एटा सिंपल पास्ट टेंस
वेरी गुड क्वेश्चन गोटे हो पारे एटा नहीं कि तो पिला माने आमे एटा को सिंपल पास्ट टेंस केमति जानिबा ना देखो डिड गोटे वर्ब अछि मेन वर्ब गोटे अछि सो हाउ मेनी वर्ब्स देयर मे बी इन ए वर्बल ग्रुप जते गोटे वर्ब थाउ पिला माने मन रखिबो द फर्स्ट वर्ब आइडेंटिफाइज द टेंस गोटे वर्बल ग्रुप रे जते भी वर्ब थाउ हाउ मेनी वर्ब्स देयर मे बी फर्स्ट वर्ब को आमे देखिरे टेंस को आइडेंटिफाई करबा डू रो पास्ट टेंस डिड अछि तेनु एटा सिंपल पास्ट टेंस हला वर्ब रो सेकंड वर्ब हला बुझुछ डिड ता कोटा आसिला डू वर्ब रो पास्ट टेंस हला डू रो पास्ट टेंस हला डिड देखो एटा V2 हे गेला तेणु ये टेंस आइडेंटिफाई कला जिते नेगेशन करबा प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिड लागिला परे एपोटे आउ पास्ट टेंस होबनी आमे कोन करू भूल रे एठी भी सेकंड फॉर्म कर दू एठी भी आमे भूल रे सेकंड फॉर्म कर दऊ किंतु जदि आमे सेकंड फॉर्म एटा कर दबा डबल पास्ट टेंस हे जिवो तेणु सेटा ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हे परिबो नाही एटा टिके इंपोर्टेंट सेम इंट्रोगेटिव कोन ना प्रथमे ऑक्सिलरी वर्ब को आनी आसे डिड को तापरे सब्जेक्ट नै जिवो तापरे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म तापरे ऑब्जेक्ट तापरे क्वेश्चन मार्क निश्चय देबो इंट्रोगेशन मार्क न देले सेटा को इंट्रोगेटिव धरा जिवो नाही तो सिंपल पास्ट टेंस रे आमे केतली यूज करबा नहीं कि is used to express an action that took place in the past time and is over now कोनोसी कार्य पास्ट रे सरी जाईछि is over now action that completed in the past कोनोसी काम जदि सरी गला action completed in the past that tense is known as simple past tense गोटी यूज तुम मन रखो केतेले करबा action completed in the past जंदी फॉर एग्जांपल आमे मु कोछि से पिलाटी पड़ी गला पिलाटी पड़ी गला पिलाटी साइकेल रु पड़ी गला सपोज पिलाटी साइकेल रु पड़ी गला एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट द बॉय फेल फॉल रो पास्ट हला कोन फेल द बॉय फेल ऑफ द बाइसाइकिल फेल फ्रॉम द बाइसाइकिल होबनी प्रिपरेशन कथा अलगा अछि द बॉय फेल ओएफ ऑफ फेल ऑफ द बाइसाइकिल से मते पार्टी को निमंत्रण कले सी इनवाइटेड मी टू द पार्टी इनवाइटेड सिंपल पास्ट हला ओके ठीक अछि तो गोटे बढ़िया एग्जांपल भी हमें नबा एठी देखो एग्जांपल देखो वी कॉल्ड ऑन मिस्टर शर्मा लास्ट नाइट कॉल्ड ऑन माने विजिटेड आमे गतर लास्ट नाइट देखो सिंपल पास्ट टेंस रे लास्ट नाइट लास्ट ईयर लास्ट शब्द गुडा को लागे सब जिंस अछि तुम सेटा जानिबो तेनो वी कॉल्ड ऑन मिस्टर शर्मा लास्ट नाइट एटा सिंपल पास्ट टेंस ला सेकंड फॉर्म आई डिड नॉट ईट एनीथिंग लास्ट नाइट काली रात रे मु किछि खाइ नथिली काली रात रे तुम कोन सार पजले बाबू रे काली रात रे तुम कोन खाइतलो What did you eat last night? Sir, I did not eat anything last night. मु किछि खाइ नथिली नेगेटिव वाला I did not eat did लागिला एटा को eat लागिला एटा V1 हला बोली एटा सिंपल प्रेजेंट नुहे सिंपल पास्ट टेंस कारण टेंस did आइडेंटिफाई करछि Did you do your homework? तुमे तुमरो होमवर्क करितलो Did you do your homework? देखो did you do एठी गोटे did लागिला एटा मेन वर्ब गेला Did you do? Yes, I did my homework. हां मु मोर होमवर्क करितली We often use the words like देखो last month, last week, yesterday in 2015 with this tense देखि भारत 1947 रे स्वतंत्रता पाइला इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 इंडिया हैड गॉट हबो नाही डोंट बिकम कंफ्यूज ओके इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 गेट भर सेकंड पर कोन कोन गॉट हे गेला तो एमती तमे सिंपल पास्ट टेंस भी करि परिबो देखो टिके करदबा एक्टिविटी गोटे किछि आइडिया आसीबो देयर डेज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट ऑक्सिलरी वर्ब अछि देखो V1 V2 देछि देखो फटाफट कर दियो देयर डेज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट आंसर दियो देयर वाज ना वेयर WAR टा WE गोटे भूल अछि ओके ठीक अछि कोन हो देयर वाज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट और देयर वेयर ए टेलीफोन कॉल अछि पिला माने यस स्टैंड अप देयर वाज ए टेलीफोन हां काई वाज लागला ना ए टेलीफोन अछि क्लास सिंगुलर अछि देयर वाज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट गत राति रे मु सकाळे कोछि ए तुमे फोन टा उठेलोनी काल राति रे तुम पई गोटे टेलीफोन कॉल आसीथिला देयर वाज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट एटी देखो खाली वाज अछि वाज पर आईएनजी लागिनी पिला माने एटी गोटे कंफ्यूजन हबो तुम पिला माने जे आगे एटा पास्ट प्रोग्रेसिव हबो कथा ना एटा पास्ट प्रोग्रेसिव नुहे खाली अछि वाज टा भर सेकंड फॉर्म इज रो पास्ट टेंस वाज होछि ना नहीं इज रो पास्ट टेंस वाज किबा वेयर प्लुरल हेले वेयर हबो सेमति आई डेस नॉट वेरी वेल लास्ट नाइट I danced not very well last night. कौन बो टाइम शॉर्टेज पिला ने कह दियो I danced not very well last night. I was not very well last night. मु गत राति रे भलो नथिली. Where danced your friend last night? Your friend देखो. Your friends. Where danced your friends last night? Friends अछि कौन बो आंसर? Yes. Pick up the microphone. Tell me the answer aloud. When? Yes. Yes. When? Where? Where? WER एरा भूल अछि पिला ने
करेक्शन डब्ल्यू यारी कर दबला दे जबटी डब्ल्यू यारी वे हबो द प्रिंटिंग मिस्टेक ओके राम डेस रावण किल्स किल्ड राम किल्ड रावण और राम किल्ड रावण राम रावण को मारिले कौन हबो व्हिच वन इज द राइट आंसर किल्स किल्ड पास्ट टेंस हेगला एक्शन कंप्लीटेड राम किल्ड रावण ठीक अछि डिड यू डेस द गेट एटी कोन लागला बढ़िया क्वेश्चन डिड यू डेस द गेट डिड यू ओपन द गेट Open the gate. गुड डिड यू ओपन द गेट तुमे गेट ता खोलिथलो की ठीक अछि सेंती पास्ट प्रोग्रेसिव देखो पिला माने वाज वेयर प्लस मेन भर रे आईएनजी आई वाज गोइंग मु जाउथली वी वेयर डांसिंग आमे माने नाचुथलु पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस गोटे एक्टिविटी करबा द ट्रेन डेस स्लोली मूव ता कोन हबो द ट्रेन पास्ट प्रोग्रेसिव करा पिला माने वाज वेयर प्लस मेन भर आईएनजी The train was moving slowly. वेरी The गुड train was moving slowly. बहुत बढ़िया थैंक यू द चिल्ड्रेन डेस प्ले नियर द हाउस The children were playing near the house. राइट द वुमेन डेस Children were playing near the house. यस The woman was preparing supper. वेरी गुड एटा तो लेटर टू गॉड रसी पिला माने द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सपर अछि ना ए लेटर टू गॉड रे राइट ठीक अछि Supper. सेमती नेक्स्ट यस हां सेमती द सन The डेस sun was shining brightly. The sun was shining brightly. हाँ yes yes the sun was shining brightly माने action that was going on in a particular moment in past so that's why it is past progressive tense was shining it hela नहीं कि the snake dash get into the The hole snake was getting into the hole. The snake was getting into the hole. yes congratulations you have given all the answers correctly thank you god bless you सेमती पिला माने हमें देखिबा past perfect रे देखो कोन हुए ना head like री main verb रो third form हबो ठीक है मने करो past perfect टा कर दबा नहीं कि I eat my lunch before my friend arrived देखो past perfect tense रे कोन हबो head like रे ठीक है स्लाइड अप कर देली पिला माने जानि छ past perfect tense head like री main verb third form head लगेबो main verb third form आ earlier action पाई खाली गोटे जिंस मने रखि तो टिपी रखि तो we use past perfect I had tense eaten my lunch before my friend arrived. good I had eaten my lunch before I my had friend arrived. eaten my lunch before my friend arrived. Very good. The patient died before they sent for the doctor. The patient died before they sent for the doctor. Past perfect karo. Patient had died before they sent for the doctor. Good. He thanked The me for what I patient do for. had died. हाँ good good ठीक अच्छी. He Had died. thanked Very me good. for do what I does for him. आउथरे he thanked me for what I had done. Done They for thanked him. me. Done for Yes, him. done for him. ठीक है very good. Next question करो. We have dinner before she left. Question is a interesting question. एटा देखो पिला माने फटाफट. We have dinner. देखो एटा करो past perfect करो. We had dinner before she left. We had dinner खाली before had- she left. Good. प्रथमे head लगेलो किंतु झियो आ गुटे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म करो. आमे past perfect काहू कहबा had plus main verb third form. देखो very interesting question. We had dinner कहले simple past हे जीवो. If we will speak we had dinner before she left एटा past tense simple past अछि. We had तापरे have verb third form कहले कोन हबो? Have verb third form कहले कोन हबो? Have verb third form कोन हबो? Have verb have V1 had V2 had V3 मध्ये होई परिबो. तेनु एटी आंसर कोन हबो? फर्स्ट लगेलो we had dinner before she left. Very interesting question पिला माने देखो एठी काई काई डबल हेड लगेले एटा इति कोन गोटे अकड़ा क्वेश्चन आंसर हला नाइ पिला माने एटा देखो पास्ट परफेक्ट टेंस एठी कोन हिची ना फर्स्ट हेड ता ऑक्सिलरी वर्ब हला एवं सेकंड दो हेड ता आसी सेटा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म have has had माने we had dinner before she left से जीवा पूर्वरु आमे डिनर ता खाइ देइलु. Very interesting. You can discuss it with your teacher also. When we arrived already हला when we arrived ठीक प्रिंटिंग होसी the rain had begun एटी राइटिंग हेइनी सेटा लेखा हेइनी नो प्रॉब्लम. अच्छा गुटे ट्रांसलेशन सी पिला माने होमवर्क रे तमे करिवो एटाकू ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रु पिला माने होमवर्क रु तम पई सेट कराइछि. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे अछि देखो पिला माने भगवान एही सुंदर विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करिसंती. पिला माने देखो एठी सृष्टि करिसंती देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
है वर्ब नहीं जीव कौन पिला माने क्रिएट तमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने हैव हैज प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ विश्व ब्रह्मांड इंग्लिश है यूनिवर्स ठीक अच्छे से तांकर ये सुंदर सृष्टि को उपभोग करने आमको आखि देइछंती है आखि देइछंती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है करि परिबो सेमती से आम घास पड़िया सृष्टि करिसंती प्रेजेंट परफेक्ट टेंस घास पड़िया इंग्लिश कौन पिला माने लिखे मिडस लिखाई करबो सेटाको आमे सेठारे खेलु एटा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे हबो आमे सेठारे खेलु एटा प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब एटा सेमती भगवान केते सर्वशक्तिमान जिए कि आम पई सब जिंस भलो आरे तयारी करिसंती टिके एठी तमे टिके सेंटेंसटा लंगर हबो टिके पिला माने भगवान केते सर्वशक्तिमान इंग्लिश पिला माने कोन हला ऑलमाइटी हला सुंदर भाबरे तयारी करिसंती हला एटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हबो सो यू विल आंसर दिस ट्रांसलेशन from Odia to English and you will show it to your teacher. So that's all regarding recapitulation of tense. I am very happy that you have participated very well. So thank you. God bless you. That's all for the day. Okay.
अपराह्न पिलाने मु आरती कालो सहकारी शिक्षयित्री सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय चड़गा मोहान ब्लॉक सबडेगा जिला सुंदरगढ़ यही वर्चुअल क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयित्री मानकु मु एई वर्चुअल क्लास को स्वागत करूछि। आउ आज आमे अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभाग रे थिबा प्रथम कविताटी को आमे रिविजन करिबा जे आमर शिक्षा वर्ष आरंभ रु आमर पाठपढ़ा आरंभ हो जाइछि गोटे गोटे चैप्टर मध्य पढ़ाई आमे छुट्टी रे होमवर्क करला तापरे ऑनलाइन क्लास मध्य हेछि के बाहर को बुली पाके जाइथिबो मामू घर की भी जाइथिबो आउ पाठ भी पढ़िथिबो किंतु एबे आमर दीर्घ दिन पर आमर स्कूल खोला हेछि ले आमे आउ थरे पाठटी को कविताटी को मने पकेइबा आउ एई पाठर ना कवितार नाम हेउछि वृक्ष महात्म्य आ तार लेखक होउछंती कवि जगन्नाथ दास जे जगन्नाथ दास आमर ओडिया आमर ओडिशार घरे घरे से परिचित से ओडिया भागवत रचना करिकी आमर घरे घरे परिचित भागवत ओडिया जातिर जातीय महाकाव्य जे आमर जगन्नाथ दास कौन करथिले से ओडिया भागवत रचना करथिले जोटा कि आमर उत्कलर घरे घरे गान करा जाय। अच्छा पिला माने तमे सुनिथिबो जे गाँ गाँ रे आगे भागवत टंगी थिला लोक माने भागवत भी गान करुथिले गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पान करी तेणे तरिले ब्रज नारी ताहेले आस आमे सेई कविंक विषय रे आमे जानिबा एवं पाठटी को आउ थरे मने पकेइबा ताहेले आस स्मार्ट बोर्ड पाखकू जीवा। कवितार ना होछि वृक्ष महात्म्य। वृक्ष महात्म्य कहले वृक्ष बा गछर महात्म्य बा महान गुण बा उपकारिता को वृक्ष महात्म्य कहा जाए। ए वृक्ष महात्म्यर कवि हेउछंती अति बड़ी जगन्नाथ दास जे से पंचदश शताब्दीर प्रथमार्धरे पंचदश शताब्दीर शेषार्ध तथा षोडश शताब्दी रे भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन बा राधाष्टमी दिन से जन्मग्रहण करथिले। तांकर जन्मस्थान हेउछि ओडिशार पुरी जिला अंतर्गत कपिलेश्वर ग्राम रे। तांकर पितांक नाम थिला भगवान दास ओ मातांक नाम थिला पद्मावती। से ओडिया भागवत व्यतीत आहुरी अनेक काव्य कविता रचना करथिले। आ सेही रचनावली गुड़िक मध्यरे ताभिणा अर्थ कोइली दारु ब्रह्म गीता मृगुणी स्तुति इत्यादि प्रधान। जे आमर कवि ए फोटो रे देखुछ जगन्नाथ दास ए जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि मिली थिला जेते बेले श्री चैतन्य 1509 मसिया रे ओडिशा को आसीथिले। से जगन्नाथ दासंकर पांडित्य देखिथिले एवं से ओडिया भागवत व्याख्या सुनी तांकू अति बड़ी आख्या देइथिले। कवि जगन्नाथ दास आम ओडिशार राजा जेते बेले प्रताप रुद्रदेव शासन करथिले से समयर से कवि थिले। आ जगन्नाथ दासंकू तांको समयर तांकू पंचसखा युग कहा जाउथिला। जगन्नाथ दास जो समय रे कवि थिले तांको समय को पंचसखा युग बोलिकरी कहा जाउथिला। आम ओडिशा रे आधुनिक युग तापरे आमर पंचसखा युग सेमिति अनेक गुड़िए युग रे भाग करा जाइथिला। सेही पंचसखा युगर कवि थिले जगन्नाथ दास। आ तांकर मृत्यु होइथिला षोडश शताब्दीर प्रथमार्धरे से मृत्युवरण करथिले। जे पिला माने जानिछ जे आमर श्रीमद् भागवत गीता सेटा संस्कृत भाषा रे लेखा हेछि। जे आमर महाभारत युद्ध समय रे श्रीकृष्ण को मुखरु जो निसृत हेइथिला जो पद सब निसृत हेइथिला श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइथिले
ତାହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ରଚିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅଛି। ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସେ ମୌଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ନେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ କହିଲେ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବା 23ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅଂଶରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଯେ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଏ ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମ୍ୟ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ କବି ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଯେ ଆମର କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର ନିଧାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଯେ ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କହିଲେ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। ଏମନ୍ତେ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଦେଶ। ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ। କନ୍ୟାଏ ମାନେ ଗୋପର ଯୋଉ ଗୋପ ବାଲିକା ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପୀ ବା ଗୋପ ବାଲିକା ମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଏ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଆମର ଏ କନ୍ୟାଏ ଗଲେ ତୋଷ ହୋଇ, ତୋଷ ମାନେ ଖୁସି ହେବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି। ଯେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଏମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କବି ଏଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମର ଅଧାରୁ ଅଛି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ମନ ଥୋଇ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ମିଳିଲେ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ଗୋପାଳ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ବା ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର, ମେଳେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର କହିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦାମୋଦର। ଦାମୋଦରଟା ଏଟା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି, ଦାମ ଯୋଗ ଉଦର ଦାମୋଦର। ଯେ ଦାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଉଡ଼ି ଆଉ ଉଦରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପେଟ। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦଉଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ନାମ ଦାମୋଦର ହେଇଛି। ଗୋପାଳ ମେଳେ ଦାମୋଦର ଗାଈ ଚରାଇ ଗଲେ ଦୂର। ଯେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ନିଧାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଯେ ନିଧାଘ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ନିଧାଘ ମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ। ରବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ। ଯେ ନିଧାଘ ରବି ତେଜ ଲାଗି ପୋଏ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଯେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ
सूर्य किरण बहुत तेज थाए किंबा प्रचंड खरा दउथाए सेई खरारे माने सेई खरा गोपाल बालक मानक शरीर रे स्पर्श करी बा सेई निदाघर प्रचंड किरण रे तांको से माने बहुत कष्ट पाउथले पोए होइले दुख भागी पोए माने सेई गोपाल बालक मानकू कहा जाइछि पोए होइले दुख भागी चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले वृक्ष को चाही दामोदर बोलंती गोपंक आगर हे स्तोक कृष्ण मित मोर श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवप्रस्थ देख ए वृक्षंक महत्व जे चरांती गोरु गोप मेले जे श्रीकृष्ण कौन करथिले ना श्रीकृष्ण गाई चराउथिले गोरु चराउथिले जे से गोपाल बालक मानक सहित मिसिकी से गाई चराउथिले चरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया वृक्ष तले जे से माने खरारे गाई गोरु चराउथिले तापरे कोन करछन्ते ना श्रीकृष्ण जे समस्तंकु सेई शीतल गछ हमर वृक्ष तले वृक्ष माने गछ तल छाई शीतल लागे सेमिति श्रीकृष्ण कोन करछन्ती सेई शीतल छाया तलकू कौन करछन्ती समस्तंकू सेई गोरुआ गोपाल मान समस्तंकू धरिकी से कौन करछन्ती सेई गछ मूलकू आछन्ती एवं सेठारे विश्राम करूछन्ती वृक्षकू चाही दामोदर कृष्ण कौन करछन्ती जो गछ तले से माने विश्राम नेउछन्ती बा नेउछन्ती सेने सेठारे श्रीकृष्ण कौन कहछन्ती जे सेई गोपाल बालक मानक आगरे से कहउछन्ती वृक्ष को चाहे दामोदर गछ को चाहे कि से कौन कहउछन्ती से तांकर सखा मानक कहउछन्ती हे स्तोक कृष्ण मित मोर स्तोक कृष्ण श्रीदाम अर्जुन सुबल अंशु विशाल देवप्रस्थ एमाने समस्ते किए एमाने समस्ते होइछन्ती श्रीकृष्णकर प्रिय सखा जे तांकर श्रीकृष्ण मानकर एमाने होइछन्ती प्रिय सखा से तांकर सखा मानकू कहउछन्ती जे से गछ को चाह से गछर महत्व को बुझ जे गछ आमर केमती उपकार करे सेटा तमे ए गछ को चाहिकी शिख बोलिकी से कहउछन्ती देख ए वृक्षक महत्व ई वृक्षर महत्व कोन अछि बा महिमा कोन अछि जे वृक्ष केमिति अन्यर उपकार करछि ताकू तुमे चाह कहिकी श्रीकृष्ण तांकर प्रिय सखा मानकू कहउछन्ती परे करंती उपकार सुजन प्राणीक व्यवहार शीत बरसा घर्म दुख सही आमको दियंती सुख धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर जे परे करंती उपकार ना श्रीकृष्ण गोपाल बालक मानक आगरे कौन कहउछन्ती से गछ को चाहे से मानकू देखाउछन्ती एवं कहउछन्ती जे गछर महत्व को गछर महानता को तुमे चाह देख जे एमाने कौन करंती परे करंती उपकार परे माने अन्यर जे गछ कौन करे जे गछ अन्यर उपकार करे से निजे कष्ट सहिकी माने अन्य मानकर उपकार रे से साहाय्य करि थाए जे हमर सुजन प्राणीक व्यवहार एठारे गछ को सुजन व्यक्ति सहित तुलना करा जाइछि सुजन माने भल लोक बा साधु लोक जे गछ आउ साधु लोक समान जे गछ को साधु लोक सहित तुलना कराछि सुजन मानक सहित तुलना करछि प्राणीक व्यवहार व्यवहार माने व्यवहार जे सुजन प्राणीक व्यवहार जेपरि भल थाए से माने समस्तक सहित भल व्यवहार करंती समस्तक सहित दुख सुख होंती कि समस्तंकु से माने दया क्षमा तांको ठारे सब किछि भल गुण सब थाए से माने अन्य को सहाय्य करंती अन्य को दान करंती माने तांकर से माने परोपकारी गुण तांको पाखरे थाए जे गछर जो जो गुण थाए सुजन व्यक्ति पाखरे मध्य सही गुण थाए सेथि पई श्रीकृष्ण कौन कहते जे परे करंती उपकार सुजन प्राणीक व्यवहार अन्यर उपकार करंती जेमिति कि भल लोक माने मध्य तांकर व्यवहार करिथांती तो बरसा घर्म दुख सही आमंकु दियंती सुख जे गछ कौन करे शीत शीत आमे जानिछु शीत बरसा घर्म घर्म माने झाल
जे आमर जेते बेले ग्रीष्म ऋतु होई थाए खरा होई थाए सेते बेले आम देहरु झाड़ बाहरे जे शीत बरसा घर्म दुख सही आमको दियंती सुख दियंती माने दियंती जे गछ शीत वर्षा खरा काकर सबु सही की कोन करूची आमको सुख दउची बा आमर उपकार करूची आमे गछ ठारू बहुत किछि पाउछु गछ बिना आमे बंची परिबा नाही जे जेमिति गछ अन्यर उपकार करे सेमिति सुजन व्यक्ति माने मध्य अन्य मानकर उपकार करंती धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर जे काहाकू धन्य कहा जायछि जे जेउ माने अन्यर उपकार करंती सेमानंको एठारे कहा जायछि सुजन व्यक्ति एवं वृक्ष को कहा जायछि धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर एठारे वृक्ष को कहा जायछि जे वृक्षर जीवन को धन्य कहि करी कहा जायछि जे जीविका हंती प्राणींकर जीविका जीविका माने काला बंचिबार माध्यम जे आमर जो प्राणी माने अछंती समस्ते कोन करंती समस्ते उद्भिद उपरे निर्भर करिकी माने तांकर जीविका निर्वाह करंती आमे गछ बिना आमे बंची परिबा नाही आमे छोट क्लास को पढिछु जे वृक्ष होछि जीवन वृक्ष बिना आमे बंची परिबा नाही प्राणी एवं उद्भिद परस्पर निर्भरशील जन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारू देई क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा एते प्रकारे सेवा करी नित्य ए पर उपकारी सुजन घरे जेन्हे जाई अतिथि निराश नुहई सुजन सुजन घर माने भल लोकंक घर को बा आमर साधु व्यक्ति घर को जदि अतिथि जाती तेबे तांकर व्यवहार एवं तांकर खाइबा पीबा किंबा तांकर व्यवहार रहिबा व्यवस्था करिबा सबु सेठारे भल भाबरे हेई थाए तेणु तांको घर को जे भल व्यक्ति घर को बा साधु व्यक्ति घर को जेउ अतिथि गले से माने मन दुख केबे करंती नाही से माने बहुत खुशी होंती किंबा तांकर सेवारे से माने संतुष्ट होई थांती तेणु एठारे श्री कृष्ण कोन कहिसंती जे सुजन घरे जेने जाई अतिथि निराश नुहई जे भल लोकर घर को जेमिति अतिथि गले से माने संतोष लाभ करंती तांको तो सेवारे से माने संतुष्ट होई थांती सेमिति आमे वृक्ष पाखकू गले मध्य आमे केबे भी निराश होई नाही किबा वृक्ष पाखकू गले भी आमे केबे हमकू निराश हेबाकू पड़े नाही सुजन व्यक्ति एवं वृक्ष ए माने दुई जण समान सुजन व्यक्ति को वृक्ष सहित तुलना करा जायछि जे आमे गछ ठारू आमे सब पाउछु पत्र कुसुम फल छाई कुसुम माने फूल कुसुम माने कोन फूल जे गछ ठारू आमे पत्र कुसुम फल छाई पाउछु तापरे तार मूल को व्यवहार करूछु बकल को व्यवहार करछु दारू दारू माने काठ पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारू देई एई सबु गछ कोन करछि हमकु सबु देई कि से हमरो उपकार करूछि क्षार अंगार भस्म अठा क्षार आमे याकू सफा करिबारे हमर व्यवहार करू अंगार काठ जलिले जो खंड खंड रही थाए ताकू अंगार कहा जाए भस्म भस्मटा होछि पाउंस से भस्म को आमे कोन आमे खत आकार रे आमे चाष काम व्यवहार करूछु अठा अठा को आमे विभिन्न जोड़ीबा कार्य रे व्यक्ति घर सजेबा जिनिस तयारी करिबारे आमर दरकार आसुछि गृह को साजी बाड़ कंटा जे गछ आमको सबु किछि दउछि तापरे गृह को साजी बाड़ कंटा माने जे बाड़ तमे माने पिला माने देखिथिबो गां रे कोन हुए जे से माने गछ को काठी किमा छोट छोट गछ को से माने गोटे घेरा करथि आम जेमती सीमेंट इटार जो बाड़ थाए सेमिति गछरे मध्य बाड़ तयारी करथांती ताकू एठे बाड़ कंटा बोली कहा जायछि जे गछ आमर बहुत सेवा करूछि एते प्रकारे सेवा करी नित्य ए पर उपकारी नित्य नित्य माने प्रतिदिन बा नीतिदिन जे गछ आमर एते सबु सेवा करूछि एवं से प्रतिदिन अन्यर उपकार करूछि।
एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्ये देह बही मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी जे एहांक प्राय जेबे होई एहांक माने वृक्ष परी जे वृक्ष परी जदि आमे हेबा संसार मध्ये आमे संसार रे जेहेतु आमे जन्म लाभ करिछु आमे वृक्ष परी हेबा जे वृक्ष परी आमे अन्यर उपकार करिबा अन्य को सहाय्य करिबा कि अन्य को आमे दान करिबा अन्य को सुख देबा सेमिति किछि काम करिबा जहा कि अन्य मानक मनरे कष्ट न हेबो जे आमे वृक्ष परी हेबा पई आमे चेष्टा करिबा एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्ये देह संसार में जेते बेले जन्म होइछ वृक्ष परी हेबा मन वचन धने करी जे होए पर उपकारी जे आमे मनरे वचनरे धनरे सबु किछि आमे अन्य मानकु दान करी आमे उपकार करिबा जे परर जे होए पर उपकारी मन वचन धन सबुरे आमे कोन करबा अन्य को सहाय्य करिबा दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह पर लोके जे दिन हरंती दुख सुखे जे माने अन्यर उपकार करंती किबा अन्य लोक को सहाय्य करंती से माने सबेले सुख रे रहंती से माने स्वर्ग सुख लाभ करंती माने सांसारिक जीवन से माने दुख कष्ट पाई थांती किंतु जेते बेले से माने परवर्ती समय रे से माने स्वर्ग सुख लाभ करिथांती जे माने भलो काम करिथांती किबा अन्यर उपकार करिथांती से माने सब बेले स्वर्ग सुख लाभ करिथांती दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह परलोके से धन्य माने तांकु धन्य कहे इह माने पृथ्वी पृष्ठ रे बा मर्त्य लोक रे एवं परलोक कहले स्वर्ग लोक जे इह माने पृथ्वी पृष्ठ आ परलोक कहले स्वर्ग लोक के कहा जायछि जे आमे इह लोक रे आमे बंचिथिबा पर्यंत आमे रहूछु परलोक मरि गेला परे आमे परलोक को गमन करूछु जे आमे जदि भलो काम करिथिबा ताहेले आम जीवन सबु लोक रे हमर धन्य हेई परिबो हमर जीवन सार्थक हेबो हमर जीवन को आमे धन्य मने करिबा से धन्य इह परलोके पुष्प पल्लव फल दले तरुर लंब डाल तले जे पुष्प माने फूल बा कुसुम पल्लव माने पत्र फल जानिछ दल माने मध्य पत्र तरुर लंब डाल तले जे गछर लंब डाल रे कोन अछि जे पुष्प पत्र फल सब कोन भर्ती हेकी अछि आ सेही गछ मूल रे सेही वृक्ष मूल रे श्री कृष्ण कोन करछंती तांकर गोपाल बालक मानक आगरे से वृक्षर महानता बा वृक्षर महत्व से वर्णना करुछंती गोरु गोपाल घेनी संगे मिलिले जमुनार लागे शीतल जल पान करी वृक्षर तले नरहरि कृष्ण को देखी गोपबाले कहंती क्षुधार बिकले से राम कृष्णर अग्रत नमई दास जगन्नाथ जे गोरु गोपाल घेनी संगे श्रीकृष्ण कौन कले ना श्रीकृष्ण कौन करछंती जे सही गोपाल बालक एवं से तांकर गोरुपल धरिकी से कौन कले से सांगरे धरिकी जमुना नदी मिलिले जमुना लगे जमुना नदी कूल को से माने आछंती लागे माने कूल रे जे श्रीकृष्ण कौन करछंती से गछ मूल रे बसिथिले विश्राम नउथिले तापरे से माने जेकी कौन कले से गोरुपल आउ गोपाल बालक मानक धरिकी से जमुना कूल को जाइछंती एवं सेही जमुनार शीतल जल राशि से पान करिछंती जे जमुना नदीर शीतल जल से ग्रहण करिछंती एवं पुणी थरे वृक्षर तले नरहरि नर माने मनीष आ हरि माने श्रीकृष्ण जे लोक मानकर कृष्ण नरहरि श्रीकृष्ण को एठारे कहा जायछि जे वृक्ष तले से शीतल जल पान करी से कोन करछंती विश्राम नउछंती कृष्ण को देखी गोपबाले कहंती क्षुधार बिकले जे कृष्ण को देखी गोपबाल माने कोन करछती से माने क्षुधार बिकले क्षुध माने भोक तांकू से माने गोरु चरेबा को जाइथिले तापरे प्रचंड खरा हेउथिला तापरे से माने गछ तले विश्राम नेछंती एवं ताकू तृषा मध्य लागुथिला एवं भोक मध्य लागुथिला से माने श्रीकृष्ण को तांकर
कौन करछंती तांकर क्षुधार विकले माने तांकर क्षुधा को से माने श्रीकृष्ण को जणाई छंती एवं श्रीकृष्ण तांकर क्षुधा को से जानी पारिछंती एवं वृक्षर तले से शीतल जल पान करिकी से माने विश्राम नौछंती से राम कृष्णर अग्रत नमयी दास जगन्नाथ जे एठारे कवि कौन करछंती जे कवि जगन्नाथ दास से श्रीकृष्ण आमर प्रभु श्रीकृष्ण को से तांकर भक्तिपूत प्रणाम जणाइकरी से एई धाड़ी को लिखिछंती से राम कृष्णर अग्रत कृष्ण को अग्रत माने आगरे जे कृष्ण को अग्रते नमयी दास जगन्नाथ से भक्तिपूत प्रणाम जणाइछंती श्रीकृष्ण को एवं से गछर महिमा श्रीकृष्ण माध्यम रे आमर कवि एठिरे वर्णना करिसंती जे पिला माने आमे एडा तमे आगरु पढिथिलो तापरे एबे आमे ताकू आउ थरे मने पकाइले आ पिला माने तुमे माने केते दूर बुझिलो सेति पई मु किछिटा प्रश्न रखिछि आ से प्रश्न गुडीकर उत्तर देबो आमर पठित कविताटी को आमे पढ़िले जे पठित कवितारे आमे वृक्षर महानता बा वृक्षर महान गुण संपर्क रे श्रीकृष्ण मुखरु आमे जानि पाते जे वृक्षर महान गुण संपर्क रे से वर्णना करछन तापरे आमे आस कथाबार्ता हेबा एवं केते कविताटी को तुमे केते दूर बुझिछ से विषय रे मु पचारि अति बड़ी जगन्नाथ दास हाँ ओडिया भागवतर रचयिता किए अति बड़ी जगन्नाथ दास हाँ वेरी गुड पूरा वाक्य अति बड़ी जगन्नाथ दास हाँ पूरा वाक्य रे उत्तर दियो ओडिया भागवतर रचयिता हेउछंती कवि जगन्नाथ दास अच्छा पिला माने तमे एबे अष्टम श्रेणी रे पढुछ आ तमे सबेले पूरा वाक्य रे उत्तर देबा पई चेष्टा करिवो कवि काहा माध्यम रे वृक्षर महिमा वर्णना करिसंती गोप बाड़क नहीं नहीं नुहे कवि काहा माध्यम रे वृक्षर महिमा वर्णना करछंती किए वृक्षर महिमा वर्णना करिसंती काहा मुखरे गछर महिमा वर्णना करा जायछि एई कविता रे श्रीकृष्ण माध्यम रे वृक्षर महिमा वर्णना करिसंती हां बहुत बढ़िया आंसर श्रीकृष्ण का माध्यम रे वृक्षर महिमा वर्णना कवि श्रीकृष्ण माध्यम रे वृक्षर महिमा वर्णना करिसंती अतिथि काहा घरे निराश हुअंती नहीं सुजन लोक अतिथि सुजन घरे निराश हुअंती नहीं हाँ वेरी गुड आंसर अतिथि सुजन घरे निराश हुअंती नहीं केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्ष महिमा कथा कहूथिले काहा आगरे गोप बाड़क मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्ष महिमा कथा कहूथिले गोप बाड़क मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्ष महिमा कथा कहूथिले बहुत बढ़िया गोप बाड़क मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महात्म्य कथा कहूथिले वृक्ष आमर किपरि सेवा करिथाए आमको कौन कौन दे थाए कुह वृक्ष आमको छाई फल फूल विभिन्न प्रकार से आमको साहाय्य करथाए हाँ बहुत बढ़िया आंसर वृक्ष आमको पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारू क्षार अंगार भस्म अठा आदि प्रदान करी सेवा करिथाए पठित कवितारे वृक्ष को काहा सहित तुलना करा जायछि
भेरी गुड पठित कवितारे वृक्ष को सुजन व्यक्ति सहित तुलना करा सुजन व्यक्ति बा साधु व्यक्ति एका कथा तापरे पिला माने आस पद पूरण करिबा चौरांती गोरु गोप मेले इति आकार गुट लागि छे चौरांती गोरु गोप मेले शीतल छाया तोड़े शीतल छाया वृक्ष तले परे करंती उपकार परे करंती उपकार सुजन प्राणी को व्यवहार बहुत बढ़िया सुजन प्राणी को व्यवहार शीतल जल पान करी वृक्षर तड़े नरहरी बहुत बढ़िया थैंक यू शीतल जल पान करी वृक्षर तले नरहरी धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर बहुत बढ़िया आंसर जीविका हंती प्राणींकर बहुत बढ़िया बस तापरे देखो तले दिया जाइथिबा शब्दर अर्थ डाहाण पटरे थिबा बंधनी मध्यरु बाछि लेख जे पिला माने एठी गोटे गोटे शब्द दिया जाइछि एवं बंधनी भितरे कोन अछि ब्रैकेट रे तार अर्थ लेखा आइछि जोटा ठीक अर्थ तुमे कहिबो क घर्म झाड़ कोन झाड़ झाड़ वेरी गुड दारू काठ काठ हाँ बहुत बढ़िया आंसर जयंती जयंती अर्थ कौन दियंती जयंती बहुत बढ़िया तापरे आस प्रतिशब्द लेखिबा प्रतिशब्द माने तार अन्य ना सबु कहिबो पिला माने जे एठी रवि अछि रवि रो प्रतिशब्द कुह सूर्य सूर्य एठी भास्कर अछि सूर्य हाँ तापरे आउ कह आउ कोन अछि दिवाकर कर समस्ते कहबा पई चेष्टा कर आउ कोन हबो भास्कर तापरे भानु भानु माने मध्य सूर्य आउटे होचे सबिता अच्छा पिला माने तमे प्रतिशब्द सब निज निज खाता रे लेखिकी रखिबो तापरे वृक्ष वृक्षर प्रतिशब्द कुह गछ गछ हाँ आउ दारू 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 माने गछ आहे दारू माने काठ काठ वृक्षर प्रतिशब्द नुह तरु 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 गछ गछ तुम तापरे पादप वृक्षर प्रतिशब्द छे तरु गछ द्रुम पादप तापरे पुष्प पुष्प अछि पुष्प कहले कोन पुष्पर प्रतिशब्द कुह फूल 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 आउ कुह बाहला कुसुम फूल आउ कौन अच्छी पुष्पर प्रतिशब्द आउ गोटे कुह सुमन सुमन मध्य पुष्पर प्रतिशब्द तापरे पल्लव
ପୋଲ ବର ପତ୍ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପତ୍ର 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 ଆଉ ଦଳ ଦଳ ପୋଲ ବର ହଁ ଆମର ଦଳ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ହଁ ଦଳ ଏବଂ ପତ୍ର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ତୁମ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। Good afternoon, dear students. I am Monica Hati from Government UP School, Valisankara. Today we are going to discuss about a chapter called Early Made Impossible Possible. This chapter was taught in the month of April, and we will be discussing the revision part. Okay, so we are going to discuss the summary and some comprehension question and some grammatical questions. Without any further delay, let's move to the smart board. The chapter Early Made Impossible Possible. This chapter was taught in the month of April, so we are just going to skim through the text and we will be solving some comprehension questions. Look at this picture. This is a picture of a courtroom. Here the judge, the defendant and lawyers are present. Okay. A revision class, so we are not going to go into the text in detail. We are going to summarize the SJPs
and we will continue with our question answer. The first paragraph, first SGP. It was a story of story. The story was is set in around a courtroom trial where a thief is caught for stealing a purse and handed over to the police. The case goes to court and several witnesses are called to give their statements. So, this in this chapter, it is a view of a courtroom where thief is caught and he is presented before the judge for due to because he stole a purse from someone. SGP 1, first part of the trial. So in the first SGP, it is a part of the trial. During the trial, the victim and 3 witnesses are brought in. The first witness is asked 3 questions. The first part of the SGP, there is a witness, the lawyer, the judge, and and the question answer between the lawyer and the first witness. So the lawyer is asking some question. Not the lawyer. The judge is asking the asking questions to the witnesses, and the witnesses are answering the questions asked to them. First question is time of the theft. The judge asked the witness, what is the time of the theft? And he says it happened during the day. His answer was that the theft happened during the day. It was daytime when the theft happened. Second question was number of people present. What was the number of people present at the time of theft? So the second answer, the first witness answered the second question is that he mentions 5 people. He just mentions that there were 5 people when the theft happened. Third question was the caller of the stolen purse. He asked the first witness what was the caller of the purse that was stolen, and the first witness replies that the color of the purse was black. Okay. So this is the summary of SGP 1. Then SGP 2, second paragraph, second witness. In this SGP, it is the interaction between the judge and the second witness. The second witness provides conflicting answers to the first witness. Okay. So he answers when the first question is asked that he claims the theft occurred at night. He says that it was night time when the theft occurred. When I saw the theft happening, it was night time. Then he goes forward to answer the second question and says that there were 25 people present at the time of the theft. 25 people when the theft was happening. Then for the third question, he answers that the purse was in the color white. The first witness answered that it was black, and he answers that he saw the white purse was stolen. This contradiction between the 2 witnesses leads to confusion in the courtroom. One witness says some answers, and the second witness contradicts it by saying another answer. Then the judge, the lawyer, and everyone present in the court will think that someone is lying. So the lawyer is very upset about it, that they gave the contradicting answers. SGP 3, the lawyer was frustrated
in SGP3 it is described that the lawyer is very frustrated because of it, because the first and second witness replied very contradictory answers. But due to the contradictory testimonies, the judge postponed the trial to the next day. The lawyer is visibly upset and blames the witnesses for lying. He concludes that there's no hope of resolving the case and criticizes the need for a third witness. Surprisingly, the lawyer's cook, Ali, overhears the situation and offers to help. He claims he can solve the case and requests to be given a chance. So, after the second witness answers the judge's question, the court was adjourned and he gave another date for the next trial. And the lawyer is very frustrated because of their contradictory answers. And for the next trial, he very frustratedly says that there is no need. We already lost the case because of you two, and we are not going to win anyway. So there is no need to present a third witness, and the thief will not be convicted for his crime. Surprisingly, the lawyer's cook was there when he is scolding the two witnesses, and he listens. He hears what he was saying, and he suggests that I will go and save the case. I can save the case, and when when I answer the questions for the front of the judge, I can make their lies or their contradicting answers so contradicting answers so I can help them solve this case, and he is given a chance by the lawyer. The SGP for Ali's testimony. Ali goes in front of the judge. The next day, Ali is brought to the witness box and questioned. Ali is standing in front of the judge in the witness box. His answer to the first question, when was the theft, that he answers that Ali it was, you can say that it was daytime or it was nighttime. Ali wisely says it was the meeting time of the day and night, suggesting the theft occurred at dusk, a time that can be considered both day and night. So he says that it was the meeting time of the day and night. Sandhya belo heitila koiki se kuhe, and it is very convenient for some people to say it was daytime and it was night time because it was the meeting time. ସେତିକି ବେଳେ ସରୁ ଥାଏ ଆଉ ରାତି ଆରମ୍ଭ होता है. Number of people. When the judge asked how many people were there when the theft was happening, he cleverly says both 5 and 25 can be true. At first only 5 were present, but more people gathered later, increasing the number to 25. So he conveniently, very cleverly says that you can say it was 5 or they were 5 people or 25 people, because when the theft was happening there were very few people. There were 5 people but when the theft happened, people heard and saw everything and started to gather around the
seen. So you can say that it was 5 or 25. Color of the purse. The third question was what is the color of the purse, and he Ali shows a black purse with a white interior, explaining that it can be called both black and white depending on part being referred to. The judge is impressed by Ali's clever reasoning and shows full agreement with his logical and for the color of the purse, Ali shows a purse, which is in color of black and white. The exterior is black and the interior is call it black, or you can call it white. Someone saw the part where it is black, then he will call it a black purse, but some people standing opposite side of the black can see the white part and he will say that it is a white purse, and it was very logical of him to say that. The judge is impressed. He is very impressed because Ali practically saved the case because and all the two witnesses before him were not falsified, were not telling lies because of his answer. So the theme of the story is theme and message. This story teaches that truth can have different perspectives depending on how and when it observed. Wisdom and clarity can resolve even the most confusing situations. Intelligence isn't limited to one's profession. Even a cook can solve a complex case through logic and presence of mind. So in this chapter we learn that can have different perspectives. If question happens and there are 5 people, so they will describe their situations very differently. Every people have their own perspectives, and every perspective can be truth. And when we are evaluating it, we have to see each of their perspectives. Intelligence isn't limited to one's profession. Even a cook can solve a complex case through logic and presence of mind. So here we will we saw that Ali is very clever, and he gives a clear logic and shows his presence of mind and solves the complex case. So now we are going to discuss some questions, comprehension questions. Who did steal a purse? Who stole a purse? Share your mic and answer the question. Who did steal a purse? Who stole the purse? The thief. A thief stole the purse. Who hired a lawyer and 3 witnesses? Who hired the lawyer and witnesses? One answer.
को किए हायर करथिबो किए ताकू नहीं आसथिबो जहार पर्स चोरी होईची The man whose purse was stolen hired a lawyer and 3 witnesses. जहार पर्स चोरी हेतिबो सीए सिना लॉयर को हायर करबो निज आडू केस लड़िबा पे Where did the police send him to? Police कोठी की पठेला The jail. The police sent him to the jail. Very good. The police sent him to jail. Jail को पठेले चोरटा को धरी की सेमाने जेल को पठेले तापरे सेमाने कोर्ट को पठेबे What was the judge's third question? Judge third question रे कोन पचारितला What was the color of the stolen purse? What was the color of the stolen purse? Very good. The judge's third question was what the color of the purse was. The second question, the jumping asked how many questions did the judge ask to the first witness? First witness को कितना question पचला? How many questions did he ask? SGP 1 रे first witness को ते question पचारी थी judge कितना question पचला? 3 questions. 3 questions. Very good. How many questions did The judge asked 3 questions to the first witness. He asked 3 questions to the first witness. Who was called next? Next किया सिला? For the question answering. the Ali? No, after the first witness, who was called next? The second witness was called next. First SGP 1 रे first witness को question पचरा ही थी. SGP 2 रे second witness को question पचरा ही थी. Yes, the answers are similar. Yes. Answers were different, not similar. They gave contradictory answers to the same 3 questions. The questions were similar, but the answers were not similar. The first witness said that the theft was committed during daytime. What did the second witness say? The second witness said it was night. Very good. The second witness said the theft was committed during night time. It was night time when the theft was happening. The first witness said that the color of the purse was black. What did the second witness say? The second witness said white. The second witness said white. The second witness said White. the color of the purse was white. What are the differences between the answers of both the witnesses to the judge's question? What are the difference? What was the difference for the first question? What did the first witness say? What did the first witness say? There were 3 questions, and for
each question, the first witness and second witness gave contradictory answers. What was the answer of the first and second witness for the first question? Answer? Yes. Yes, we believe that they told the truth. We know that the two witnesses would be present at the theft place in different times, so they said what they had seen in different manner. For the answer? Okay. So the first and second witness both gave contradictory answers for their every three questions. Okay. To answer the first question, the judge, the first witness answered it was day, while the second witness answered it was night. For the first question, they both answered differently. First witness said it was day, and the second witness said it was night. In the second question, the first witness answered there were 5 people, while the second one replied it was 25 people present. For the second question, they further gave contradictory answers and replied that it was for the first witness it was 5 people present, and the second witness said that it was 25 present. At the For the third question, they replied it was black purse, while the later one said that the purse was white. For the third question, they further gave contradictory answers by saying it was a black purse and it was a white purse. Okay. Why couldn't the third witness come? The third witnesses could not come because they had some problems. The third witnesses could not come because they had some problems. Thank you. The third witness had some problems, so he could not come. Why was the lawyer not happy? Why was the lawyer unhappy? The lawyer was not happy because two witnesses gave contradictory facts. So very good. The lawyer was unhappy because the witnesses gave two different answers for the same question. Whom did he scold? Who was scolded after the trial? Whom He did scolded the two witnesses. The lawyer scolded the two witnesses. He scolded. Who was listening to all that happened? Who was listening when he was scolding the Ali was witnesses? listening to all that happened. Ali was listening to all that happened. Very good. Ali was listening while this was happening. Who was Ali? Who was Ali? Ali was lawyer's cook. Ali was the lawyer's cook. Okay. Did the lawyer agree to take Ali as the third witness? No, the lawyer agreed. The lawyer not agree to take Ali as the third witness. But in SGB 4 we saw that Ali gave the answer. So the lawyer finally agreed to take Ali as the third witness. Okay. Is it possible that the theft time was both day and night? Is it possible or not? Is it possible? Yes, that it the is theft possible.
Yes, it is possible that the theft time was both day and night. Very good. If it is possible, and we saw how it was possible. It is possible that the theft time was both day and night. And Ali made it clear in his answers that it was possible. It is possible that the number of persons present in the court was both 5 and 25. How? Yes, it is possible that the number of persons present in the court both 5 and 25 because 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 When first the theft was be, when the theft was present 5 and become after 25. very good. Yes, when the theft was committed, there were only 5 people. When the theft was happening, it were just 5 people, but then 25 people gathered around the scene. There were only 5 persons, but slowly the number increased to 25. आमे भी रास्ता रे जाउथबा कोउटे दुर्घटना की कोन हले आमे कोन स्टार्टिंग रे जणे कि दुई जण थिबे किंतु धीरे धीरे लोक माने देखि कि कोन होंती जमा होंती कि नै सेंती सेई थेफ्ट जटकी बेले हला 5 जण थिले किंतु धीरे धीरे समस्त जमा हे कि 25 हे गले. What did Ali do when the judge asked about the color of the purse? When the judge asked the third question about the color of the purse, what did Ali do? Ali showed a purse, both in color of white and black. The inside was white. When and the judge the asked outside about was the color of the purse, Ali say white. The color of the purse is white and black. Ali showed a purse. He showed a purse, and inside was white and outside was black. Yeah. Inside was white and outside was black. Was the judge satisfied? How do you know? At the end, the judge was satisfied or not? How do we get to know that the judge was satisfied or not? What do you think? The judge was satisfied or not? Yes, the judge was satisfied. He smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. Gave full agreement to the questions asked to Ali, and he replied very cleverly, and he was very satisfied about his answers. So now we are going to solve see some plural forms of some words. These are nouns, and when we make them in plural form, their spelling changes. Okay, so we are going to see how the spelling changes. Can anyone say what is the plural form of man? Men. MEN men. MEN, men. Very good. The plural form of man, MEN, man is MEN, man. What is the plural form of reason? Reasons. Reasons. Very good. Reasons. We add a S to the primary word. Okay.
Can anyone answer the plural form of word present problem? Problems. Problems. And the plural form of witness? Witnesses. Witnesses. Can you spell the word witnesses? Witnesses. WITNESSES. So here we are adding es. Here we just added s to problem, but here we are adding two letters, e and s. Okay. Thief. What is the plural form of thief? Thieves. Thief. THIEFES. VES. Plural form of thief is thieves, and here we see that the spelling changes entirely. Okay. So here are some words and their different forms. You have to learn various words in order to use that in your English. And here are some words and example for you to learn. Okay. आमे एथिरे किछिटा जस्ट वर्ड आनिकी एठी देखाइछि तुमे बाकी वर्ड गुड़ा को निजे लेखिकी अभ्यास करिवो. ओके. तो आमे जानिछु गोटे वर्ड रो चारटा फॉर्म थाए, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो आमे एई पाठरो केतेटा शब्द नै कि एई सबु वर्ड सबु बाहर करा हिची. ओके. स्टील शब्द जो अछि प्रेजेंट फॉर्म रे तार सेकंड पास्ट फॉर्म होछि स्टोल, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होछि स्टोलन एंड द फोर्थ फॉर्म होछि स्टीलिंग जोटा होछि प्रेजेंट पार्टिसिपल. सेंती आउ केतेटा शब्द दिया हिची. कैच रो होछि caught then catching. सेंड रो होछि sent then sending. Arrest रो होछि arrested and arresting. तारो होछि replying. Hired, hiring. Asked रो होछि asked, asking. तो आमे जानी चुकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ड जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रे थाए सेटा होछि वर्ब रो ing फॉर्म है ना. Write the opposite word using im prefix. तो आमे जतकी बेले हमर चैप्टर ता पढुछु, चैप्टर ना होछि only made possible impossible possible. only made impossible possible. तो सेठिरे दुइटा शब्द अछि पॉसिबल आ इम्पॉसिबल. सेम शब्द सेठिरे गोटे थिरे im प्रीफिक्स लागि छि, आगो पटे im लागि छि आ ए im लागिबा द्वारा कोन होला ना तार वर्ड रो मीनिंग ता पूरा चेंज हो जाउछि, माने विपरीत शब्द हो जाउछि. तो सेंति हमें im लगे कि केते जो शब्द अछि से शब्द गुडी करो ऑपोजिट वर्ड को हमें लिखिबा. ओके. Can anyone answer what is the opposite word of possible? Impossible. Impossible. Okay. Pure. Impure. Impure. And mature. Immature. Okay. आमे आई एम आगो को जोड़िबा. Imperfect. प्रीफिक्स माने कोन आमे आगो पटे ए वर्ड रो आगो पटे आमे जोडुछु आई एम सेति पय ताको कहै जुछि प्रीफिक्स. ओके. परफेक्ट कोन हबो ऑपोजिट वर्ड? Imperfect. Very good. Imperfect. And movable.
immovable. immovable, Here are some other prefixes. Okay. So in our previous slide, we saw that I am prefix was added, and here are some other prefixes. ए प्रीफिक्स गुड़ा को आमे जोड़िले शब्दर ऑपोजिट वर्ड भी आसुची आमे आगो स्लाइड रे देखिले खाली ई आई एम थिला किंतु एइथे देखो अछि यू एन आई इन आई एम आई आर डी आई एस आउ एन ओ एन एई शब्द गुड़ा को भी आमे आगो पटे लगेबा हेले शब्दर अर्थ बदली जाउची आउ विपरीत शब्द हे जाउची ओके हैप्पी हैप्पी टा कोन हबो यू एन लगी की unhappy, unhappy unhappy, correct correct कौन लगुची आई एन incorrect, incorrect, इनकरेक्ट ओके करेक्ट माने ठीक इनकरेक्ट माने भूल देन पॉसिबल पॉसिबल रे हमें इम्पॉसिबल हमें पाठर स्टार्टिंग रो हमें देख जानी चाहिए रेगुलर रेगुलर रे लगुची आई आर irregular, irregular okay then agree agree रे लगी आई आर disagree, disagree disagree, agree रे लगी बा dis लगी के हबो disagree patient patient रे आई एम लगिले कोन हबो impatient, impatient अच्छा एक्टिव एक्टिव रे आई एन लगिले कोन हबो inactive, inactive, सेंते पोलाइट रे आई एम लगिले कोन हबो impolite, impolite सेंते लीगल रे आई एन लगिला illegal then sense रे illegal, sense रे नॉन लगिले नॉनसेंस हमें हमें जानी छु हमें नॉनसेंस वर्ड ता सुनी छु हमें जानी छु है तो एटी देखो वर्ड गुड़ा हैप्पी माने खुशी अनहैप्पी माने खुशी नुह माने दुखी अछि से सेंते वर्ड गुड़ा रो ए वर्ड गुड़ा रो ऑपोजिट वर्ड हे जाउची सेठी तो हमें प्रीफिक्स जोड़ी की लिखिले सेटा ऑपोजिट वर्ड हे जाउची तो नेक्स्ट आमे इथे गोटे कॉलम देछि सेही कॉलम रे हमें मैच करबा ओके मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर ऑपोजिट इन कॉलम बी कॉलम ए रे वर्ड अछि तार ऑपोजिट अछि कॉलम बी रे हमें मैच करबा तो एग्री कोन हबो disagree, डिसएग्री लीगल illegal, illegal then patient impatient, पेशेंट रो अर्थ जानि जो कि पेशेंट माने होची धैर्य इम्पेशेंट माने अधैर्य हे जिबा देन पोलाइट रो impolite, पोलाइट ओके रेगुलर रो irregular, ओके lar, तो हमें एबे बहुत सारा वर्ड रो प्रीफिक्स लगे कि ऑपोजिट वर्ड करबा को केनते हुए हमें जानि पारले तो हमें से वर्ड गुड़ा को नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स करबा फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑपोजिट यूजिंग प्रीफिक्स हमें प्रीफिक्स लगी थिबा वर्ड को ए फिल इन द ब्लैंक्स रे यूज करबा ओके 1 it is dash to drive without a license कौन हबा हमें जो कॉलम रे वर्ड गुड़ा यूज करथिले सेही वर्ड गुड़ा मझिरु किछि गुटे आसीबो तो it is dash to drive without a license illegal very good
He was very dash when waiting in the long queue. এটা কোন হবো? Impatient. तो long queue মানে लंबा धाड़ी से जबकि बेले ठिया होची झियोटा से बहुत impatient हो जाउची. Please don't be dash. Speak nicely to others. এইটি কোন হবো? Nonsense. नहीं nonsense हबनी. आउ गोटे word थिला मने पकाओ. Impolite. Very good. Please don't be impolite. Speak nicely to others. हमें जबकि बेले गोटे वाक्य हमें गठन करूछु नहीं सेतकि बेले हमें पढ़ी कि देखिबा गोटे वर्ड जदि हमें एथिरे लेखुछु हमें जदि भी नॉनसेंस लिखिले हमें पढ़ी कि देखिबा प्लीज डोंट बी नॉनसेंस स्पीक नाइसली टू अदर्स हेले भलो सुभा जाउनी तो हमें गोटे एंती शब्द लिखिबा जोटा टिके भलो सुभा जिवो हमको लागिवो कि ठीक अछि ओके वेरी गुड अटेम्प्ट that clock has an dash shape the clock has dash shape irregular very good the clock has an irregular shape very good he decided to dash with the final decision एथिरे कोन हबो EIS like what a prefix like disagree very good he decided to disagree with the final decision very good हमें किसीटा नुआ वर्ड सिखिले और से नुआ वर्ड को आज हमें ए फिल इन द ब्लैंक्स रे व्यवहार करले ओके अच्छा हमें जबकि बेले पाठटा पढुछु SGP 3 रे SGP 3 there was a line sir I have been cooking you for the last 10 years and you know I can cook the judge and the governor तो हमें ए वाक्यटा देखिबा ए वाक्य रे कोन अछि इंग्लिश ठीक अछि कि तार अली रो इंग्लिश ठीक अछि अली ठीक भाबरे कहि छै कि No. no his English was very bad okay so हमें सेंटी किसी सेंटेंसेस अछि से सेंटेंस गुडी को ठीक भाबरे लेखि के देखिबा एई सेंटेंस रे कोन अछि भूल कोन हला सर I have been cooking you for the last 10 years and you know I can cook the judge and governor एथिरे कोन लागिनी गोटे प्रीपोजिशन लागिनी for कोइ कि गोटे प्रीपोजिशन अछि सेटा कुकिंग आगरो लागिबा कथा सर I have been cooking for you for the last 10 years and you know I can cook for the judge and the governor okay तो एठी for रो हमें प्रीपोजिशन जो लगी से तार भूल व्यवहार हे जाई तो हमें सेंटी किसी वाक्य देखिबा जोथिरे हमें ठीक व्यवहारता जानि परिबा रॉन्ग देखो भूल वाक्यटा अछि she is married with a doctor तो आंसर टा कोन होची she is married to a doctor तो with जगह रे कोन हबो to लागिबो ओके बुझी पारु छ कि नै ए सेंटेंस रे married with a doctor ए जो प्रीपोजिशन टा लागला सेटा भूल हे जाई तो she is married to a doctor से डॉक्टर को बाहाई छी हैला I am good in dancing एटा ठीकटा कोन होबा कि के कहि परबो कि I am good at dancing in जगह रे at हबो okay then he is afraid from dogs तो एथिरे कोन हबो from जगह रे कोन लागिबो
He is afraid of dogs. Okay, he is afraid of dogs. Then the book is in the table. So in जगह कौन लगिबो? In ता भूल अछि. In जगह On. On. on the table. Very good. The book is on the table. The book is on the table. Very good. She was born on 2005. On जगह कौन लगिबो? In. Very good. She was born in 2005. He went on home after school. So on जगह रे कौन हबो? On he went to home after school. Okay, very good. I have been waiting since 2 hours. So एटा हबो I have been waiting for 2 hours. हैला since ता बहुत लंबा समय जाको लंबा समय आमे बसिले सेटा हबो किंतु बसिबा समयटा आमे since लगेई परिबा नाही आमे लगेबा for 2 hours आमे किछि घंटा बसि परिबा आमे दिन दिन बसि परिबा कि तो लंबा समय पई आमे since व्यवहार करू He jumped in the river to save the boy. He jumped into the river to save the boy. Hala. She is interested on music. तो on जगह रे कौन हबो? किए कोई परिबो? She is interested in music. We discussed about the problem. तो ए लाइन रे कौन भूल अछि? तो ए लाइन रे हबो इटा we discussed the problem. एठी about ता लागिबनी. Okay. Discussed word रे ही discussed माने ही होची हमें गोटे विषय रे कथा हेबा. तो तार अर्थ ही होची अर्थ ही होची discussing about something and जदि हमें discussed about लगे दबा हेले दुई थरा about हे माने गोटे लाइन रे दुई थरा ता जो अर्थ जक्की बेले हमें बाहर करबा दुई थरा about आसी जिवो तेल करी हमें जक्की बेले discuss वर्ड यूज करूछु हमें about लगेबा नाही ओके तो क्लास परे हमर होमवर्क आसी जाईछि तो तीनटा क्वेश्चन अछि हु आर देयर इन द स्टोरी where did the police send the thief and how many questions did the judge ask तो ए क्वेश्चन तीनटा रो आंसर पिला माने निजे निजे लिखिबो आओ निका टीचर को देखेबो तो आज ए क्लास रे पिला माने समस्ते जो पाठ पढ़ाई थिला तो सेटा को हमें मने पकेइले तो रिवीजन मु भाबुची समस्तनकर भलो कि हेतिबो धन्यवाद।